Victor Tango Sierra Mike Sierra Mumbai Tower. Unable to spot traffic. Mumbai Tower, Victor Tango Sierra Mike Sierra, spotted traffic at long finals for runway 27. Victor Tango Sierra Mike Sierra holding position for runway 27. Okay, Sridhar, very good attempt. Students, readability check. Come on, if you can hear me on a scale of 5 or not. खुद से कर दिया करो ना. All stations, all stations. How do you read? Read you 5, Victor Tango November Kilo Charlie. Read you 5, Victor Tango Papa Romeo Kilo. Read you 5, Victor Tango Sierra Sierra Mike. Read you 5, Victor Tango Oscar Mike Golf. Radio 5 Victor Tango Sierra Mike Sierra. Radio 5 Victor Tango Romeo Tango Alpha. How do you read? Victor Tango Romeo Tango Alpha Mumbai ground. Read you 5. Primary 87845. Secondary 778464. Mumbai ground Victor Tango. Say again all. Victor Tango Papa Romeo Kilo Mumbai ground. Relay last transmission to Victor Tango Romeo Tango Alpha. सुबह सुबह जॉब पे आ गए हैं, but nobody wants to work. Very good morning, everyone. Why so sad? What's wrong? Is everything okay? Good morning, sir. Very good morning. What's happening? Good morning. A very happy middle of the week, Wednesday, right? I hope I'm right. Yes. Good morning, sir. क्या है ये? सुबह सुबह ऐसा लॉन्ग फेस? नहीं पढ़ना यार, छुट्टी चाहिए. क्या करोगे छुट्टी का? प्रेरित, श्रीधर, रोहिता, सुचिता, बाकी तो कोई कॉल भी नहीं दे रहा है. ओम, अनन्या, no calls. Nukul at least took a call. Jyotsna, how are you? Let me know over text. And whenever we have to practice calls live. All stations बोला, इतना बोला, सब चुप बैठे हैं. तो श्रीधर बोल रहा है ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बोल देता हूँ थोड़ा बहुत. Okay, buck up students. Need some coffee? So what's happening in this situation? In this situation when one station called ATC or called all stations, like the first call was made to all stations, ATC interrupted and said stop transmitting. Now stop transmitting is an example that I like to share with you all. Stop transmitting is actually the words that can be used by ATC to prevent any pilot,
any aircraft, any aeromobile station from transmitting those frequencies, no matter what. Why? Because the reason could be a lot of things with respect to incidents. But the causing factor is that the frequency on which you are required to stop transmitting for a brief period, for a temporary period, that frequency is required to be left alone for an aircraft in distress or urgency. So, whenever you are asked to stop transmit, it means somewhere or the other in the vicinity of the aerodrome, there is an aircraft that is going through a difficult situation, and all attention has to be going to that particular aircraft. So, other pilots that are requiring certain basic clearances, be it departure related clearances, arrival related clearances, everybody will be asked to stop transmitting and proceed as per their normal navigation or be into a holding pattern or just hold their positions if they are on ground. So be careful. Such calls sometimes you should be aware of such things like stop transmitting is something you can say and use. This is something that you might have not practiced till now in any of your sessions. So the agenda for today is pretty simple. We are going to practice a few calls, and Gulshan is not here. Gulshan is the one who needs to be giving us a mock. Sridhar, Hussain, Nukul, Rohita, Suchita, and then Tanmay. If I'm missing anyone who has their exams in Mumbai and I'm not taking your names or not given you mocks, please let me know. All right. So how are we doing today, Nukul and Prerit? Nice to see you all. Very good morning. What's happening? One by one, tell me. Sir, I'm good, sir. Give me an update on our team. I have practicing with some calls and I have pending 3 lectures, so I completed. And I'm revising the part 2 section right now. So, Nukul, if I have to ask you, what type of navigation systems are used on aboard an aircraft? What are the different navigation equipments that are used on board an aircraft? What would be our answer? Give me this answer with respect to giving an answer for your part 2 Viva. Sir, there are a number of navigation aids which are used in aviation, but currently we have VOR, which are majorly used in aircraft. The VOR stand for very high frequency omnidirectional range. It transmit two frequency. One is frequency modulation, and second one is amplitude modulation, which has a 30 hertz of frequencies. So uh, it measures difference between two frequency. One frequency is a directional frequency, and another one frequency is a uh, have a phase difference as respect to the direction. And on board the aircraft, there is a receiver to receive these both frequency and differentiate between two frequency and measure the course or radial according to the VOR station. Okay. Nukul, very good attempt to explain VOR, one of the most important navigation equipments. This question is most frequently asked question. Okay. And I want the answers to be at par with the expectations that the examiners have. So there are two things that happen in part 2. A question is asked and an answer is given. Very simple.
The first thing is pretty easy. Anyone can ask any question. They have list of questions, and then they can think out of the box and ask you outside questions as well. What matters and what decides whether you'll clear or not is the second part, the way you give the answer or the kind of answers you give, or whether you give correct answers or not, incorrect answers, partially correct or incorrect. Or maybe you just are quiet if you don't know something, or maybe you're just non-responsive or unresponsive. Depending upon how the second part is fulfilled, which is a basic thing of answering, it all matters there finally after part one. It all depends upon that. Not everybody who clears part one clears part two. So if I have to tell you that, would I take that answer as an answer that will help you pass, depending upon other few questions, then probably I'll say not that great. Why? This why you need to understand, and then you'll have to try to answer me again after 5-10 minutes, preparing a good answer in your mind. Okay. Effort is good, point set are correct, VOR is an important navigate correct. Remember the strategies for part two, students. Make a note of these strategies in your own ways, one by one. The first strategy is when you're given a question, let the question be played in your mind for some time and let the mind give you some answers. When you get the answers, arrange them properly in your mind. How will you arrange them? You'll arrange them with the skeleton structure that I give you. You might be thinking, sir, ye kya bol raha hai? But just think about it, observe and do. That way you will be able to match the expectations from the first part and make it equal or better in the second so that you can guarantee your results. The question, everyone, write it down. प्रेरित ने तो कोई मुझे लग रहा है एल्बम लॉन्च किया है, उसका मेरे को टाइटल पेज दिख रहा है का वो पोस्टर समथिंग फ्रोजन हो गया प्रेरित. Prerit, how do you read? All stations, all stations. Invictus Control, how do you read? All stations, all stations. यार रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग. अनन्या, प्लीज रिप्लाई. रीडेबिलिटी चेक. कम ऑन. रोहिता, रीडेबिलिटी चेक. ओम, रीडेबिलिटी चेक verbally. Prerit, readability check verbally. Come on, one call at least, some acknowledgement at least when you start the session. I don't want to teach a blind class or a class that is not there. Radio 5, Victor Tango, Oscar Mike Goal. Radio 5, Strength 5, Victor Tango Sierra Mike Sierra. Radio 5, Victor Tango Alpha November Papa. Radio 5, Victor Tango, Romeo Tango Alpha. Students, I need energy and please smile, okay? I'm not going to take such calls that are sounding so dead. These are final prep sessions. Buck up, smile. If you don't want to be in the class, don't be in the class. Okay? First thing in the morning, I don't want long faces. If you have a problem, talk to me. Let's fix it out. Let's fix it. Clear it out. क्या ये जबरदस्ती calls दे रहे हो? कोई problem है क्या? I'm asking again and again, okay? I'm sensing something and I don't want the vibe in the class. I'm going to make you practice a lot of calls, and if that's how you want to do it, then I don't want to do it. I'm pretty serious about it, okay? Respond. Otherwise, I'm not talking, okay? Everybody speak for 30 seconds. One by one. Speak anything about RT.
बच्चा पार्टी, व्हाई आर यू गिविंग मी डेड एयर? प्रॉब्लम क्या है? 5 सेकेंड 10 सेकेंड कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नुकुल, आपका एक वीडियो चालू, आप सिर्फ शक्ल देख रहे हो, बाकी लोग तो शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। क्या है ये सुबह सुबह? टॉक टू मी। प्रेरित, व्हाट्स हैपनिंग? सुचिता, व्हाट्स हैपनिंग? श्रीधर, रोहिता, why are you so low and why you're not participating? Sir, I had a It's the disconnection. eighth lecture. 8 lectures. Do you even realize it's been 8 days we have been doing live sessions? Does it feel like 8वें दिन पे हो आप लोग? 8th day I can make a beginner proficient on the 8th day. Anyone can. I mean, anyone can study. I'm expecting so much of high quality, high level calls. I'm going to give you practice in a way that real pilots talk about. And after insisting also, I'm getting this no response, dead air. You know those times when the instructors walk out of the class? That happens once a year or once a semester. You want to do that here? So yesterday I did part 2, revised VOR and ADF, NDB, and also did some regulations like DGCA and ICAO for part 2. Talk about navigation systems. Okay. 1 second. I'm giving a 30-second timer to everyone. I'll take the call sign. You have to just talk. And if I get a dead air of more than 3 seconds before you start, I'm not going to give you the session today. I'll just put you out in the waiting room, okay? On your mark, get set, go. Om, what do you know about radio navigation systems? We have radio now systems like VOR, NDBs, Lorenzi, ADF. VOR stands for VHF, means very high frequency omnidirectional radio range. ADF for automatic direction finder, and Lorenzi used for long range communications. रुक क्यों गए? इतना ही याद आया। तो बीच में चुप हो जाओगे? सामने वाले को बोले ना और नहीं याद आ रहा है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स. This is not done, okay? On your mark, get set, go. Prerit. Sir, radio navigation प्रेरित, system 5 सेकंड का डेड एयर आया स्टार्ट होने से पहले। आपको लैग आ रहा है क्या? कंटिन्यू। Yes, sir. Sir, I have a connection issue. My Wi-Fi is not working today. फिक्स इट, गेट इट फिक्स्ड। अगर नहीं चल रहा है उसको खींचो मत स्टूडेंट्स। टेल मी इफ यू कैन नॉट फिक्स इट, आई विल हेल्प यू ऑल। बिना इंटरनेट के कैसे पढ़ाई होगी हमारी? नहीं हो रहा फिक्स तो बताओ ना, विल फाइंड द प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और कुछ नहीं तो डेटा पैक ले लेंगे ना एक्स्ट्रा, स्पॉन्सर दैट, हॉटस्पॉट पे यूज करो अच्छे से। आई हैव टू डू दैट समटाइम्स, वाईफाई डजंट वर्क, बैकअप 5G चल रहा है आजकल, नो प्रॉब्लम। Communicate, talk about your problems to make things easier for yourself. Carry on with your answer. The radio navigation, it consists of VOR and VDF, VDF. VOR, it is a very high frequency omnidirectional range. जो नहीं करने बोला है वही क्यों कर रहे हो? डेड एयर।
Prerit? See, students, Yes, sir. this is something that will prevent you from not do well in part 2, and still you are doing it, everyone. It's not a joke. You want to read something that a student sent who could not clear yesterday? Read it out, okay? I will not take the name. मजाक लग रहा है ना आप लोग को सुबह सुबह? You have to be one of the best here in the class, and this is how the best people perform. Simple words, okay? Sir, I have good experience in exam. Even I fail. Question was very easy. I could not because I feel कि मैंने आपके बातों पे असर कम किया. So your training is more than passing marks. Student wanted to talk and meet, but I didn't have time. I just said, how was your exam? And I'll talk to you when I can. Do you want to realize all these things after you get negative results? हाँ सर आप सही थे हम गलत थे या आप सही बोल रहे थे हमें बस थोड़ा और मेहनत कर लेना चाहिए था. Then be my guest. Be my guest. Another student who cleared, I'll tell you their response, okay? Hello sir, I cleared part 1, but part 2 was not okay because they asked difficult questions. I could answer only 5-6 questions. I asked, how do you feel clearing part 1? I said, congratulations. Send me a draft of your part 1 questions and part 2 as well. How do you feel about clearing part 1? I get a response. I tried my best. Now I'm feeling confident about part 1, but not for part 2. Same issue again and again. Now the issue has been fixed for part 1 because the student has experience, but the student is facing the same issue with part 2. Now again, the student possibly requires another experience in part 2 to develop the confidence and clear. But what are the odds if that student doesn't clear part 1 again in the next attempt? An instructor's response is, see, you have nothing to lose if you stay positive. Sometimes luck also works. If we don't stay positive, then we are not doing our best. ये भी सिखाना पड़ रहा है. Because problem वो है वहां पे. Just follow the training. अगर आपको बोल रहा हूँ dead air मत दो, तो मत दो. अगर आपको बोल रहा हूँ calls में energy चाहिए, तो चाहिए. अगर आपको बोल रहा हूँ just fake a smile and then study, then you have to do it. You don't have any other option. And it is not for me. I'm not earning and you're not my employees. It is for you to get your result. It is one thing to be a good student and respect. And it's another thing to do as you're told. If you're not doing as you're told and you're good and respectful, you'll not get your results. There's a student, okay? That student, they fly for the Indian Army, all right? And they want to transition, okay, into commercial. So they've started with RT and they're working full time, okay? Working full time. That too in defense. First attempt RT, Delhi, Feb, okay? All of a sudden, after 5-6 lectures of J23, workload increased. Student cannot study. Duty first, right?
13th February, okay? 13th February. Exam is somewhere around 28th. 13th February, I'm messaging. Any free days coming for you to have a short session with me? Student says, I really want to. My training and inspection is lined up till 23rd and I'll get back to you ASAP. Regards. Now, this is real life kicking in. Okay, real life struggles that someone who wants to study cannot study. I said, no issues, I understand. Student says, to be honest, I'm so underconfident and I hate it. Someone with 17 years of flight experience. Okay. What is the instructor saying? Why underconfident? See, no matter what, work first. If work isn't giving you time to study, it means you did well in studying as much as you can so far. अगर काम के वजह से टाइम नहीं मिल रहा है मतलब अब तक जितना तुमने टाइम निकाला है ना दैट्स मोर देन इनफ दैट इज अ वेरी गुड थिंग लेट्स बैंक अपॉन दैट जो भी 7 लेक्चर हुए हैं आपके फर्स्ट रिसोर्स वी नीड फॉर आरटी एग्जाम इज कॉन्फिडेंस नो मैटर व्हाट समथिंग एवरी पायलट कैरीज राइट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओवर चैट 13 Feb कॉल्स के लिए कहाँ टाइम मिलता है The reply comes, okay. I had made elaborate plans, schedules, but couldn't follow it. ... So I understand what the student is struggling with. A lot of guilt that I cannot study more. Access is there, lectures is there, sir is there. I am not getting time. Instructor is replying to this question. So what? If everything is not going as per the plan, if you cannot follow it, so what? What are you thinking? So what? The response comes, I haven't given up, but would have done better. Would have done better. मैंने give up नहीं किया. I'm going to still try. But I would have done better if things would have fallen in my favor. Again, a reply, okay? Such things happen everywhere in aviation. Things might not go as planned. Trust me, our RT exams are such. You be happy and give yourself 30 minutes study time every day. If not more, just read and revise. If nothing more. Reply comes, thank you for your kind words. We'll definitely do that. And then the last message. That day, never forget you have what others many don't. Real life experience. Imagine having flown for so many years. Do you think that will not matter? Do you think that will not come in handy for someone doing RT? Definitely it will. Only the difference is what is modern RT and what is that? A few things. So now we bank upon. So this is crisis management. Okay. And then later, the student is finally pushed, motivated, giving 30 minutes a day because they are following the advice. Someone who's 15 years older to me is also following the advice because they know the strategy is going to work. Why? Because that's the job, that's our duty. Then when the student is studying, sir wanted request for 2 things, summary of all calls and variations if the data bank exists, practice question papers. I'm planning to attempt at least 2 papers a day. That is what the student wants. Should I give this to the student or not? I have to decide. The student has given that to me. Sir, जो भी आप बताओगे मैं कर लूँगा. Then the student is sharing notes. At last, some time मिला पढ़ने के लिए. Thanks for motivating. Okay. Then I get one more copy of notes the next day. One more copy of notes the next day. So finally 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. So up to lecture 10, I can see the student had covered. Okay, Golf 22. Then the student is sharing papers shared by other friends and all as they have appeared, sharing all session में कब आया, क्या आया, full in detail. So they have good collection because their colleagues, their peers, they are all experienced people flying for Air Force, Army. So they're very thorough. But it doesn't matter question papers, this and that. Not really needed also. On the day of exam, one day before, Jai Hind sir, I have reached Delhi. Exam is scheduled for tomorrow morning. Haven't been able to study as planned, but revising through your notes. Regards. See what's happening. This is what I mean to say that update me regularly, students. I said very good. That was 28th Feb. Exam was on 29th, whatever, 28, 29. I don't know if 29 was there this year. Or maybe 1st March was the exam. 10th March,
I sent a screenshot. Was this your roll number? Remember, I was sick, but that day I got so many messages for the results that I actually wanted to talk to students for 15 minutes. 10th March, I say, was this your roll number? And the student says, yes, all thanks to you. Said, congratulations. Do you understand what's happening here? The student cleared the exam. And see what we got after congratulations. Dear sir, I can't thank you enough for your invaluable guidance and support. Most of all for motivation for appearing the exam. I wasn't going to appear only. As you know, due to heavy commitments, I could study only 7 days. Thank you for making me believe. क्या हो रहा है यहाँ? What are your thoughts? Share your thoughts. If I keep doing this, बहुत टाइम लग जाएगा. So, are you ready or not? Simple question. If yes, then do as you are told and show that in your performance. Yes, sir. Victor Tango November Killer Charlie. I cannot hear that or feel that in your voice. Sorry. At least you have responded. I appreciate it. I don't feel that. Affirm, sir. Victor Tango Alpha November Papa. Feeling it slightly, Ananya, but I'll give you benefit of doubt. Probably you're not well. Ready, sir. Victor Tango Juliet Yankee Oscar. Feeling it slightly, Jyotsna, not much. Nukul, try again. Affirm, sir. Victor Tango November Killer Charlie. Still not feeling it. At least you tried twice. I appreciate it. Sir, feeling confident now. Victor Tango Sierra Mike Sierra. Feeling it slightly, not very much. Sir, I'm ready. Victor Tango Sierra Sierra Mike. Feeling it slightly, Suchita. Have felt much more confidence levels from your end. A lot more. Feeling it very slightly though. Prerit Om, Feeling positive, sir. Victor Tango Papa. you don't sound positive, sir. Not feeling it. Affirm. Victor Tango Oscar Mike Gold. थोड़ा better था. प्रेरित Yes, sir. क्या हो रहा है? I'm giving you some 5 minutes to wash your face, students. Come back 11 what? And we'll start with a session. And I'm not gonna say this and that, okay now? If you do or if you don't do. But please follow the instructions as I'm gonna give you. Nukul, 1000 बार तो नहीं, चलो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन का आंसर हमने सिमुलेट किया है. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू ट्राई एंड रिकॉल दैट. स्ट्रैटेजीज भी दिया आपको कि पहले आप क्वेश्चन को दिमाग में घूमने दो 5 से 10 सेकेंड. ओके, सो अबाउट
So you'll say, okay, sir, thank you for the question. Navigation equipment on board an aircraft. You give a readback of something by acknowledging so that the question revolves in your mind. You don't just jump out to give an answer. When you jump out to give an answer, पूछा है nav equipment, आंसर आ रहा है VOR का, पता नहीं क्या एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से स्टार्ट किया आपने. वो VOR का प्रिंसिपल्स है. आपको VOR का प्रिंसिपल नहीं पूछा है. आपको एयरक्राफ्ट पे नेविगेशन सिस्टम्स क्या क्या है, नेविगेशन इक्विपमेंट्स क्या है, वो पूछा. आप VOR का प्रिंसिपल बता रहे हो. फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? nav इक्विपमेंट ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? VOR का प्रिंसिपल. मैच हो रहा है दोनों? आपने एक लाइन अच्छी बोली कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज VOR एंड देन VOR स्टार्ट किया. वो अच्छा लगा मुझे. चलो, यू गेट गुड ब्राउनी पॉइंट्स देयर. बट स्टिल उसके बाद का आंसर VOR प्रिंसिपल बता रहे हो. मेरे को nav इक्विपमेंट जानने थे पहले. तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है आपको? आई विल टेल यू आफ्टर यू टेक दैट शॉर्ट ब्रीदर. एवरीबडी विल प्रैक्टिस एंड मेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज कल ही ये एवरी टाइम हर पार्ट 2 में ये पूछा जाता है क्वेश्चन. 1.5 out of 2 sessions, I would say, is the probability of this question being asked. Not even 1.5, like 75% of the chances. Like आएगा ही आएगा. आपको रेडी होके जाना है इस क्वेश्चन के लिए. पार्ट 2 के हिसाब से ये क्वेश्चन मास्टर कर लो. सारे पार्ट 2 के आंसर्स कैसे देने आपको आ जाएंगे. आपको सिर्फ पार्ट 2 की थियरी करनी है उसके बाद. And for RT Viva part 2, the theory becomes very easy to study. Now for all of y'all, today onwards that you are continuing, if we can master part 2 अच्छे से एक बार, then the only thing that will be left will be part 1 practice proficiency, for which you have time and sessions. So we are ready to clear exam, no matter if our exams are in Chennai or Mumbai or Delhi or Hyderabad or Kolkata. And we don't come down from that level. So जितने भी लोग आप लोग क्लास में हो ना, आप लोग को 2 से 3 सेशन से ज्यादा नहीं चाहिए. Considering you have completed G213 and the 7 part 2 lectures, which eventually will happen. Today, I want an update anytime during the session about your personal progress with RT completion of lectures. If you have done a merge of a different batches, then you know you have covered everything. So you'll say, sir, mera sara ho gaya. I'm just doing this right now in RT. And those who have just in between and not completed even one set of lectures, like I think Prerit send me lecture 9 or something, lecture 10, you'll update me once more. Part 1 so and so, part 2 yet to begin. Simple. अब प्रेरित बोल सकते हैं, मेरे को आता नहीं है पार्ट 2, क्या आंसर दूं? मैंने VOR सुना तो VOR बोल दिया. I tried my best. Of course, I understand that. But then you either give excuse or you give your best. Aviation ऐसा है, इंटरव्यूज ऐसे है. सर मेरे को आता नहीं है, बट मैं मेरा बेस्ट देके दिखाता हूँ आपको. ऐसे भी बोल सकते हो और आंसर दे सकते हो. Simple. So you set up the expectations. I'll give you these soft skills, pick them up, work on it, discuss. Okay? And that would be the biggest takeaway you will have from the session today. And no compromises. As in, whatever I'm telling you, I will check verbally whether you are able to respond in the same way today itself. It can be a quick exercise, or I can keep eating your brain if you don't perform well. The choice is yours. And I'm a vegetarian. कोई तो ऐसा. चलो, enjoy your short break. 11:30, come back. With a smile, okay?
Welcome back, everyone. Let your presence be known. I mean, let me know if you're there. I just want to know if everyone is back. Redit is back. Rita, Om, Jyotsna, Ananya, Suchita. Great. Only I think we are pending Sridhar's confirmation. Victor Tango, Sierra Mike, Sierra. Mumbai Control. Victor Tango, Sierra Mike, Sierra. Mumbai Control. Mumbai Control, Victor Tango Sierra Mike Sierra. गो अहेड कौन बोलेगा भाई साहब? वे डांट खा के गए हो, आके फिर से डांट खानी है? बोला है आपको, ट्राई करो गो अहेड से भी रिस्पॉन्ड करने का। वैसे तो ठीक था, बट कुछ इंस्ट्रक्टर्स गो अहेड भी मांग रहे हैं हमसे। भाई साहब, क्या चल रहा है यार श्रीधर? कुछ बोला है आपको, कुछ करो ना, उसका रिस्पॉन्स दो, करेक्ट कॉल दो। चुप क्यों हो यार? ये फिर से चालू मत करो यार तुम लोग। दिस इज नॉट मुंबई गुड, का ओके? दिस इज नॉट गुड। आपको बोला है 5 सेकंड से ज्यादा मुझे डेड एड नहीं चाहिए, मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। पहला चीज, पहले इंटरेक्शन पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है। व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाट्स रॉन्ग? मेरा वॉइस में डिले है क्या श्रीधर? प्रॉब्लम है क्या कुछ? मेरे को बताओ। नो सर। तो फिर क्या है ये चीज? कोई आपसे बात कर रहा है ना, आप चुपचाप बैठे हो, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो। कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। स्टूडेंट्स, एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आरटी। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। रह जाएगा सेशन तुम्हारा यार। तुम भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता वो चीज। तुरंत दो ना जवाब। आज वर्बल एक्सपेक्टेशन है तुमसे एक्नॉलेजमेंट की। समझ नहीं आया क्या अभी तक? कम ऑन यार, डोंट डू दैट अगेन। सॉरी सर, इट वोंट हैपन अगेन। सॉरी की बात नहीं है, पुश योरसेल्फ। यहाँ सॉरी और फॉरगिवनेस वाला इश्यू नहीं है। परफॉर्मेंस, इट्स योर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। गलतियां के लिए सॉरी नहीं करना है, उनको इंप्रूव करना है। ये वो वाली गलतियां नहीं है जहां हमें फॉरगिवनेस सीख करना होता है। सॉरी क्या? अरे सर करता हूं मैं, थोड़ा टाइम दो। हाँ, दैट इज कॉन्फिडेंस। बोलो सर गिव मी सम टाइम प्लीज, थोड़ा झेल लो मेरे को, आज मत डांटो। दैट इज कॉन्फिडेंस। सर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बस पढ़ाओ। दैट इज कॉन्फिडेंस। ऐसे बात करो ना यार। आई एम सो फ्रेंडली विथ यू ऑल। कम ऑन, बी पॉजिटिव. In the end, it all boils down to giving you pravachan only every day. I don't like it. मेरे दिमाग में आता है कि मैं ना मॉडर्न सत्संग का यूट्यूब वीडियोस डाल के बैठू बच्चे लोग के लिए। पता है, ऐसे सब आइडियाज आती है दिमाग में। फिर आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट देन। इट्स एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर. So today's majority of learning is based upon this one answer that you're going to perform back to me right now. Observe, learn, and ask doubts. You have to clear part 2 in your first attempt as well, not just part 1. Okay? Part 2 is not that as difficult as people say it is. So let's stop listening to people. All right? Part 2. The question is, write down everyone. The question is, what are the different types of navigation equipment carried on board the aircraft? Anina, give me a read back of the question once you have written down the question.
Sir, can you say again? I cannot say again. Somebody please relay. Victor Tango Alpha November Papa, Victor Tango Sierra Sierra Mike, relaying for Mumbai ground. What are the different types of navigation equipments carried on board the aircraft? Very good relay, very good confidence, good rate of speech. Suchita, just write these calls also. Okay, always I've said whatever you're talking, giving calls, write it. But excellent. I can feel the energy and confidence now. ऐसे नहीं बोलूंगा मेरे को 200% दिख रहा है, but this much is enough for me. Great. Ananya, I could sense that in your reply also. I liked it. Good reply. That please say again. मेरे को नहीं आया कुछ भी. Very good. आया नहीं आया से फर्क नहीं पड़ता. Acknowledgement is very important, and this is what I'm seeking. And when you're acknowledging, when you're talking, I need you to be confident. That's it. And you're doing well, both of you all. Nukul, very proactive for you to also. टॉटॉइस के स्पीड पे जाके अनम्यूट करना एंड कॉल देना कुछ ट्राई चल रहा था शायद. थोड़ा रैबिट स्पीड पे आ जाएंगे बस अभी, और कुछ नहीं. वेरी गुड. सो अनन्या, मिला आंसर नहीं मिला, कॉल मिला नहीं मिला, रीड बैक एक्नॉलेज करना पड़ेगा सिरा सिरा माइक को भी एंड मेरे को भी. ठीक है. Victor Tango Sierra Sierra Mike, Victor Tango Alpha November Papa. What are the different types of navigation aids carried on board the aircraft? Roger, Victor Tango Sierra Sierra Mike. Very good. Everybody got the question? Affirm, sir. कौन बोला अफर्म? कॉल साइन नहीं बोला. Affirm, Victor Tango Romeo Tango Alpha. Everybody got the question? सिर्फ रोहिता बोल रही है, अनन्या बोल रही है, चिता को पता है. बाकी लोग का वर्बल चाहिए यार. तुम लोग आज इमोजीज क्यों दे रहे हो जब आप मुझे वर्बल चाहिए? Affirm Victor Affirm. Tango Oscar Mike Golf. Affirm Victor Tango Sierra Mike Sierra. Affirm Victor Tango Papa Romeo Kilo. Affirm Victor Tango November Kilo Charlie. The question is a very simple question. This answer, and it's not just about this answer, it's about the way you give the answer. It's very important. आज दिमाग में बिठा लो. Part 2 के लिए आज से आपकी final prep शुरू होनी चाहिए. Whether you have studied Part 2 or not, doesn't matter. Part 2 simultaneously start करना है. Anyone who has not begun with Part 2 lectures, tell me if you don't have the sessions, I'll give you. Simultaneously start. Couple hours Part 1, couple hours Part 2 is what you can do today. Don't wait for anything else. Don't wait for exam dates. Don't wait for Chennai. Don't wait for whatever. Do it now in the moment. Get free from RT. Students with other subjects, एक दो दिन में हम सब शुरू कर रहे हैं वापस. बम्बार्डेड हो जाओगे, फिर आरटी प्रैक्टिस नहीं करने मिलेगा. जानबूझ के सिर्फ आरटी रख रहा हूँ कि आपका पॉलिशिंग हो जाए अभी के अभी, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस भी है. प्लीज अंडरस्टैंड. वॉक विथ मी टू द अदर साइड. यू हैव टू वॉक. आई कैन नॉट ड्रैग यू. ऐसी बात है ना? अंडरस्टैंड. सब समझ गए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? एक दो दिन और मिल रहे हैं, स्पेशली नुकुल, सुचिता, ज्योत्सना, फॉर यू. एंड आपके लिए तो मेन है कि बस आरटी एक दो दिन में फाइनल पॉलिश कर लो आप, क्योंकि हम मैथ की नई चीजें पढ़ेंगे, रेक्स पढ़ सकते हैं, नया फाइनल प्रेप कर सकते हैं. इतना ही बचा है, ज्यादा टाइम नहीं बचा. आप तैयार हो जाओगे, जो भी एग्जाम्स आगे दोगे डेफिनेटली क्लियर कर लोगे. सब पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत लो.
थोड़ा आगे पीछे चल रहा है मुझे पता है, बट इवेंचुअली रियलाइज इट्स वर्कड इन योर फेवर ओनली. बट पॉइंट एट हैंड क्या है, आरटी फाइनल प्रेप चाहिए मुझे. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब भी मुझे एक एक मॉक अच्छा दोगे अभी आज या कल में ही, बस जो भी मैं प्लान करूंगा जैसे भी, कि हम रेडी हैं आरटी के लिए. बाद में सिर्फ रिवाइज करेंगे और मॉक करेंगे एग्जाम के पहले पहले बस. बट रेडी है, वो रेडीनेस चाहिए अभी मुझे. रेडीनेस एग्जाम में आएगा नहीं देखना है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10 days और सो बाकी सबका भी पॉलिशिंग हो जाना चाहिए. प्रेरित, अनन्या, ओम, यू आर ऑल्सो अलॉन्ग विद देम ओनली, लाइक पहले जो नाम लिया मैंने. श्रीधर, यू आर ऑल्सो, बिकॉज आपका भी मेरे हिसाब से हो गया है पूरा. गुलशन तो पता नहीं क्या ही कर रहा है. रिमेंबर दिस, ओके, दिस इज माई प्लान, आई एम रीडिंग इट आउट. लिख लो, समझ लो, प्लान ये है. नहीं तो हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होके जाएंगे, हर चीज में 2-2 मार्क के लिए रह जाएंगे, तो क्या ही मतलब, हम खुद बोर हो जाएंगे ना लाइफ में, फिर डिमोटिवेट हो जाता है ना. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Okay, question is, what are the nav equipments carried on board the aircraft? Okay. Now, any question, the strategy begins with acknowledging the question. Okay. आज जो मैं पॉइंटर्स दे रहा हूं ना, अच्छे से बैठ के उसको स्टडी करो एवरी नाउ एंड देन, एंड डेवलप योर इंटरव्यू स्किल्स अकॉर्डिंगली. एक दिन में नहीं आएगा, आज तो सबसे परफॉर्म करवाऊंगा ही, देखूंगा कितना समझ आया आपको. बट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गैदर. इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कोई भी पार्ट 2 का क्वेश्चन आपको आंसर करना है. एग्जाम्पल ऑफ एन आंसर इज दिस क्वेश्चन, बट द स्ट्रैटेजी इज यूनिवर्सल टू गिव ऑल आंसर्स इन योर पार्ट 2 वाइवा. These strategies are developed on basis of a lot of resources. One of the most important resources, experience. Experience with respect to what works to help you clear part 2 in first attempt or second or third, mainly first. What doesn't work to not help you clear part 1 in that first attempt. It's a strategy that is actually working and works and will work. If you don't follow it, it might not work if you don't have any other strategy. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ this is the only strategy, but this is the best strategy because it has a long-term benefit to it. Okay. Answer strategies, common strategies and their examples. This is how I'm going to divide the flow chart. Is everybody understanding what I'm teaching you right now? It is very different. सिर्फ आंसर और क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको, वो तो आपके पास ऑलरेडी है. रोहिता समझ रही है. हाउ अबाउट अदर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इफ नो, देन आप अपना सेल्फ स्टडी कर लो. जो समझ रहा है वो बैठो, उनको पढ़ा दो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. नुकुल, Yes, sir. नुकुल, शेड्स हैं तुम्हारे पास? शेड्स, चश्मा, कुछ ग्लेयर्स, No, sir. Right now I सनग्लासेस, don't have. No, सनग्लासेस. sir. तुम आर्टे निकाल लो, आई गिफ्ट यू वन. वेरी नाइस, है ना, मेरी तरफ से. ज्योत्सना बोल रही है सर मेरा क्या. ज्योत्सना, टेल मी व्हाट यू लाइक. ज्योत्सना बोली सर यू रेड माय माइंड. क्या बोल रहे हो नुकुल? I have these spectacles. स्पेक्टेकल्स तो नंबर वाले होंगे ना, अब जरूरत नहीं है तो मत पहनो. ओके, नो प्रॉब्लम. नुकुल, अनन्या सोच रही है सर स्पेक्स पहन के जा सकते हैं पार्ट 2 में, सनग्लासेस, विल आई गेट मोर पॉइंट्स? मैं तो चले जाओ. मैं नहीं डरता किसी से. मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, डीजीसी या डब्ल्यूपीसी बोलो, तुम सवाल के जवाब दो, तुम्हें आता है. बोलेंगे तो कौन है भाई, निकालो इसको, बैन करो लाइफ टाइम. हम जस्ट किडिंग मैन, कम ऑन. हो गया मेरा आरटी में, तो मस्ती करने आए हो. बोलेंगे कौन है ये. बोलेगा चिल चिल, चाय पानी मंगाओ कुछ. क्या इतना काम करते हो आप लोग, रिलैक्स. एंड देन आई विल वॉक आउट एंड दे विल रिमेंबर मी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ.
Such things remind me of these guys, Ranveer Singh and all, like crazy guys. They do anything. If you happen to meet them out somewhere in Mumbai, you'll be like, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहा है? But we are used to it. We're like, chill है. करने दो उसको जो करना है. So coming back to answer strategies, the first thing that you acknowledge the question. Students, remember, RT communication acknowledgement is not just important for your calls. Acknowledgement is important everywhere in aviation. Acknowledge. Generally, we say the word Roger to acknowledge in our calls, affirm, negative, standby. These are common one-word acknowledgements that we have to give quickly, at least, so that the other person knows that the conversation is gone. Okay. Here, this is the question. What are the nav equipments carried on board the aircraft? How do I acknowledge the question? The benefit of acknowledging the question is that the question stays in your mind before you jump up to answers. If you jump up to the answers, your answers are not structured because of lack of practice, lack of confidence, or just human factors. And when it is not structured, so the kind of answer Nukul gave is the kind of answers we'll get where the question is different and the answer is partially right a little bit, but majorly not correct, matching with the answer. Acknowledging the question actually says that you're owning the session from your side. You're one of the best because they might not have seen anybody like you there. So you get added advantage over there that, okay, very nice. ऐसा उनके मन में आएगा. Okay, so they'll see you in that light. And we need that for you. So how do we acknowledge the question? There are many ways you can acknowledge the question. Whatever you feel comes to you can be done, but generally it could be a read back. Okay. Or it could be a sort of read back as in the question turned into a statement. Okay. So the statement that comes to my mind right now is the statement I'm going to give you. Example for this answer, it will be the first line of my answer. Okay. There are a variety of navigation equipments used on board an aircraft. We all know this statement. We all know this answer. We don't have to study this. But you get an answer for free. There are a variety of navigation equipments used on board an aircraft. We call them radio navigation systems or radio navigation aids as they use radio waves to help us with safe navigation. Take a moment. I'm giving you 10, 15, 20 seconds after every point. Study it, ask questions. If you don't ask anything, I'll continue with the next breakup and next point. Anytime it gets too difficult for you to understand, too complicated, drop me a chat box message, raise your hand, talk to me. If things are good, if everything is fine, if you're feeling happy, if you think you're getting it, give me an acknowledgement over text that I am getting it. If you don't acknowledge, if you don't ask questions, you might have got it, or you might still need more time to study. I'm not going to be the judge of it. So it's okay. Understand. Why are they asking you about navigation aids? It's an RT exam, radio exam. Why navigation? Because navigation systems are based upon radio waves. And you're using RT license to operate radio frequencies.
So as a pilot, you'll not just be operating radio frequencies. You're not just a communication officer on board the aircraft. You're also the pilot flying, as in the PIC, pilot in command. So if you want to be a pilot or an engineer, if that's the reason why you are doing RT or wanting to have RT, then you're required to know about these basic radio nav systems also. Whether you have done ground studies or not, whether you have done navigation, CPL preparation or not, whether you belong to the avionics category of engineering or not. So this is added requirement or added expectation from their end for you, although the exam is just for communications. Why? Because all the calls that you take in the exam, especially calls where you are in mid-air, that moment you respond with respect to radial and DME. And then when there are arrival calls, you talk about ILS. So in your calls, you're talking about 3 pointers that deal with 3 different navigation systems. So if you're using those hypothetical values in your calls, then as a professional, you are required to know the theory behind them also. You cannot just ratify calls and give them as answers in your calls, is the expectation. But many students do that. So that's the point of concern. They want to check. So you will see radio navigation questions will always be asked to you in your part 2 Viva. लोरेंस सी डिमांड पे आप लोग को सिखाया गया है, पहले लोरेंस सी सिखाते भी नहीं थे, पुराना हो गया है वो. प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट नो आजकल क्या चल रहा है और जो हम पढ़ रहे हैं वो चलता है कि नहीं चलता. जो आपका बेसिक सीपीएल सिलेबस में है, यू कैन से सम ऑफ इट इज एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बट इट इज नॉट आउट ऑफ सर्विस. सो इट इज नॉट आउटडेटेड. वो बेस है, वो सब जगह होता है जहां मॉडर्न नहीं होता है. यू माइट लैंड एनीवेयर, सो यू नीड टू नो दैट. मॉडर्न में तो डेटा लिंक चलता है आजकल यार. डेटा लिंक तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है. वेरी लकी, आई एम सेइंग दैट अगेन, कम्युनिकेशंस के लिए. ऑल्दो इट्स नॉट डिफिकल्ट. I think 6 months down the line, they'll complicate the exams with data link questions also. So we can be ready always. But abhi nahi, abhi zarurat nahi hai. Acknowledge the question. Remember the benefit. ये point में bracket में benefit लिख दो. Buy some time before you give the answer so that you can structure the answer, frame the answer in your mind. A strategy similar to the strategy you use in part 1 Viva. Part 1 practical calls. All following this, soak everything in. This session, if you pick up the way I want you to, can change your life. Will change your life for the good with respect to success. Something that I want for all my students, as much as I want it for myself in life. This is not cheating, okay? This is exactly how you acknowledge and strategies behind it. Don't think ये कोई shortcut है या कोई game है ना? Don't think it's conning someone. No, this is how we talk. प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्कूल में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट नहीं है. इंडिया में तो कहीं सिखाते हैं कम्युनिकेशंस. चलो, पॉइंट नंबर 2. Instead of explain, right, start with introduce the types with their
explanations, or start with / introduce the types of RNAs with their applications, not explanations, with their applications. With respect to this question, if you think about it, what does it mean? Start with. So now is the moment when your answer starts. So the first two things is just acknowledgement. वहां पे आप कुछ भी डालो अच्छे से by some time. अब क्या हो रहा है मेरे दिमाग में क्वेश्चन है नैव इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में से VOR ही आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है VOR से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, या फिर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, द टाइप्स. So how will I start? Now look at this, okay? Based upon their required usage at different segments of flight, we have en route navigation systems, terminal navigation systems, arrival nav aids, let down service nav aids, holding related nav aids, direction finding nav systems, nav aids, nav equipments. This is what I'm expecting, Nakul, for you to answer the question. Begin with. सीधा VOR पे नहीं, VOR इसमें से ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस को फुलफिल करता है, इसीलिए VOR इतना इंपॉर्टेंट है. एंड हम ऑलरेडी VHF यूज करते हैं ना, तो VOR भी VHF है, तो अच्छा है हमारे लिए वो चीज, क्योंकि ऑलरेडी VHF स्टेशन यहाँ वहाँ होते हैं इतने सारे. सो VOR स्टेशन, VHF स्टेशन जहाँ जहाँ वहाँ VOR स्टेशन भी बना दो आप. इसीलिए एवरी मेजर एयरपोर्ट हैज VOR एज अ टर्मिनल VOR, एज इन पॉइंट टू पॉइंट, डिपार्चर अराइवल के लिए भी यूज हो रहा है आपके लिए. So for those students who don't know, who have not studied much, these are keywords of navigation: en route navigation, holding, let down. What is let down? Let down is you have reached over an aerodrome. This is the aerodrome. You have reached, let's say, flight level 50 or flight level 100, 100 that is. यहाँ से आप लैंडिंग के लिए कैसे आओगे? ऐसा डाइव तो नहीं मारोगे, राइट? कैसे करोगे? ऐसे भी नहीं आ जाओगे सीधा. यू डू दिस, लाइक दिस, रेस ट्रैक पैटर्न में धीरे धीरे करके ऐसे आप नीचे आके लैंड करते हो. दैट इज नॉट होल्डिंग. होल्डिंग इज होल्डिंग वन ऑल्टीट्यूड. लेट डाउन इज डन विद द पोजीशन फिक्स फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन. वो ग्राउंड स्टेशन के ऊपर ही आप एक 1 डिग्री टर्न, 2 डिग्री टर्न के हिसाब से टर्न लेते हो. सब आप नेविगेशन में सीखते हो, बहुत ईजी है. टाइम बचेगा तो मैं आपको वो टर्न सिखा दूंगा 15-20 मिनट के सेशन में एक्स्ट्रा. उसमें होल्डिंग भी आ जाएगा, लेट डाउन भी आ जाएगा. जरूरत है नहीं, बट एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या दिक्कत है? कल को पूछ सकते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं ये सब चीजें. टर्मिनल मींस एरोड्रोम तक पहुंचना या एरोड्रोम से निकलना. जनरली एरोड्रोम तक पहुंचने के लिए भी VOR काम आता है हमारे. पॉइंट टू पॉइंट, मुंबई टू दिल्ली कितने VOR आ रहे हैं हमारे अल्फा 474 पे? वो ऑन रूट हो गया बीच में. इनबाउंड अहमदाबाद हो गया. फिर हमने क्या क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं. प्रतापगढ़ भी एक आता है, उदयपुर आता है, जयपुर आता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रूट्स यू आर टेकिंग. दैट इज ऑन रूट. ओवरफ्लाइंग, फ्लाइंग बाय, ट्रांजिट क्लियरेंस.
अराइवल में ILS, माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम MLS. For holding you can use VOR, for holding you can use NDBs. NDBs are ground stations that radiate in all directions, LF and MF frequencies. Those frequencies are received by onboard ADF, automatic direction finder. So ADF in itself senses directions. It's an older navigation equipment. NDBs are ground stations strategically located all along the airways. ADF, NDB are not one thing, separate things. These NDBs, if they are located at aerodromes, NDBs can also be called as locator beacons also. They can locate a place. Then you can put a position fix as in tune to that particular NDB with respect to whatever systems you have, and then do your turns and kill time. If that is what you want to do, that is called holding. Kill time on a particular altitude in a safe space. गोल गोल घूमते रहो बस. Safe वो आपका रिजर्व्ड है, कोई नहीं आएगा वहां पे. तो जब depending upon how much fuel is available, limited time तक ही कर सकते हो आप. Similar to sector, we can say, sector flying. So you explain the answer to these questions like this. Now you start talking about different systems. एक एक सिस्टम को नाम लो, फुल फॉर्म बोलो, एक फंक्शन बोल दो उसका बस, और कुछ नहीं बोलना है. सीधा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, प्रिंसिपल, इक्विपमेंट यूजेस, ये सब अभी नहीं पूछेंगे आपको. टाइप्स पूछे हैं, टाइप्स बोल दो, उनका बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दो. उसमें से या तो वो लोग आपको एक या दो अच्छे से बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ द टॉपिक, या तुम खुद चूज करोगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ. आ रही है बात समझ में? सीधा वीआर नहीं बोलना. एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ नुकुल का, ऐसा नहीं सिर्फ नुकुल के लिए हो रहा है. इट्स अ गुड एग्जाम्पल दैट वी हैड प्रैक्टिकल. उसको तो काम आएगा ही, सबको काम आना चाहिए. सर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा तो आप जैसा ही है, तो आप सीख लो और करके दिखाओ, है ना? बी रिसेप्टिव स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड दिस मच? डायरेक्शन फाइंडिंग जनरली मेन तो VDF आता है यहाँ पे. VDF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन फाइंडर. Abhi VDF is one such system where you don't have any system on board the aircraft. As long as you have VHF comm systems, that is VHF communication system, you can use VDF. But you don't have VDF on board the aircraft. कभी ढूंढना भी मत, कभी मिलेगा भी नहीं. VDF doesn't have anything on board the aircraft. But VDF is available with the air traffic controllers on ground. It's like a radar screen only, but not like a radar screen. It's a CRT monitor. So that's where your Q codes come into picture with respect to direction finding. QDR, QDM, magnetic track to the station. QDM, magnetic track from the station. QDR, QTE, QUJ, true track to the station, true track from the station. 4 directions. इतना तो हमें करके जाना है, पार्ट 2 आएगा अगला. True directions, magnetic direction, CDMBT, navigation we all study. Anybody who's interested has 2-3 hours. I'll give you the session to watch. है ना? Nav lecture 1 and 2, F22. Study this, soak it in, acknowledge. Let's move ahead and finish this answer now. इतना सेट कर लिया, अब देखो कैसे डिस्क्रिप्शन होता है इस आंसर का. फाइनल स्टेप ही बचा है, 3 स्टेप में खत्म आंसर. Soak it in, see if you have any questions, discuss. In the meanwhile, I'll discuss. I got a point of discussion in the chat box. I like how finally students are studying the way you're supposed to with respect to my expectation. So I'll just read it out again. I'm getting it. I used to do same thing when I was in school. When I didn't know the answer, I used to write same question as answer, but in different word, and it doesn't look like same question. And a LOL emoji. So something similar to that, but actually required element of your replies is something. वहां तो चलो आप खाली मत छोड़ के आओ, कम से कम 1 मार्क तो मिलेगा करके हम लिख के आते थे. जो स्ट्रैटेजी ये स्टूडेंट बोल रहे हैं एग्जाम में, सो दैट किक्स इन.
The logic is same here. If you don't know an answer, at least acknowledge the question. Don't be quiet. Don't leave it empty. That can actually get you, that will definitely get you extra marks and you have to do it. But in the way we are learning and not in a cheating kind of a way, students. Everybody getting it? Someone who's not getting it, talk to me. Almost done with this part. Now you'll see the final element of the question, answer. And then I might ask the same question to you or something else, and I would be seeing how you are doing it. And then whatever you are doing, based upon that, you will go ahead with your prep and then give me a better or a much better or better than better answer ahead. That's the whole idea. That's it. The sooner you do it, the sooner you can go back to wherever you have come from in the class. See the question, point 1, point 2 study करो, answer का example देखो, ध्यान रखो समझ आ रहा है नहीं समझ रहा है. If you are ready, if you have got it, acknowledge via text on the Zoom chat box. अभी टेक्स्ट मांग रहा हूं तो प्लीज इमोजीज मत देना. इमोजीज, जोक्स, एक्सप्रेशंस. एंड जब मैं टेक्स्ट नहीं मांग रहा हूं तब दे सकते हो यस नो मे बी का शायद नहीं है ना कोई रिएक्शन. आई एम वेटिंग फॉर 8 चैट मैसेजेस ऑन जूम. श्रीधर तुम्हारा आ गया, दोबारा से भेजो, दोबारा से पूछ रहा हूँ तो. मुझे तो देखना आप लोग को समझ रहा है कि नहीं यार, नहीं तो फिर कुछ चेंज करो ना स्ट्रैटेजी. ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है सीखना ये चीज. Roger, Victor Tango Alpha November Papa, Roger, Victor Tango Romeo Tango Alpha, Roger. Victor Tango, Juliet Yankee Oscar, Roger. कैसे है Mike Roger, Papa Romeo Kilo Roger, Oscar Mike Golf Roger, Sierra Mike Sierra Roger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. November Kilo Charlie. Waiting for your wrist. Okay. We have a very good question. Do we also have to include airborne weather radar and radio altimeter? Yes. Yes. You can definitely add real-time surveillance. Write this, add this to the segment 2. Jyotsna, thank you very much. ये भी डाल देते हैं, एक्स्ट्रा मिलेगा इस पे आपको. अच्छा लगा मुझे. कैसे लिखना है इन दोनों का डिस्क्रिप्शन, रेडार का एंड एयरबोर्न वेदर रडार का इंट्रोडक्शन में सेकेंड एलिमेंट ऑफ द आंसर आई एम टेलिंग यू. 1 second. Real time traffic surveillance. Okay. Real time traffic surveillance through radar, range measurements from en route or terminal
nav aids. In bracket, you'll write via DME. Low level altitude indication. In bracket, you'll write via radart, that is short for radio altimeter. En route weather observation to avoid bad weather. In bracket, you'll write via airborne weather radar, AWR. Traffic proximity and collision avoidance via Icats. And automatic surveillance between all aircrafts and or stations via ADS-BC. ये जो मैंने आपको दिया है ना अभी आंसर में, एक छोटा सा, ये समझ लिया ना आपने, आपका पार्ट 2 आप एक दिन में रेडी करके जा सकते हो, एक दिन में, विथ रिस्पेक्ट टू नैव सिस्टम्स एटलीस्ट, बिकॉज आपको इतना ही टाइम मिलने वाला है आंसर देने का। अगर आप जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इतना भी आपने भूल दिया है ना इस क्वेश्चन पे, ट्रस्ट मी, बाकी आप 10 में से 5 क्वेश्चन और सिर्फ करेक्ट दोगे ना, फिर भी आप पार्ट 2 पास हो जाओगे। थैंक्स टू ज्योत्सना। एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है आपको? नहीं तो मैं तो सिर्फ बेस कर रहा था आपको, अब तो एडवांस सिस्टम भी कवर हो गए सारे। किसकी हिम्मत है आपको ना क्लियर करने की, अब बताओ आप। कितना भी वो लोग चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। yesterday I took one of the students final mock, like of course not final, वो परफॉर्मेंस ऐसा था कि फाइनल हो गया वो मॉक। that student made some few errors but that student got 86 in the mock, and जितना भी मैंने ट्राई किया मार्क्स कट करने का, 76 से कम नहीं दे पाया मैं। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नुकुल आप तो नॉट कर दिया करो, अच्छा अच्छा लगता है जब बच्चा हाँ ऐसे करता है, तो लाइक रियल क्लास फीलिंग होती है ना क्लासरूम वाली। आई एम एक्चुअली टायर्ड ऑफ सिटिंग एंड टेकिंग सेशंस, यू नो, लाइक नॉट टायर्ड, अच्छा है, गुड फॉर माई हेल्थ राइट नाउ बिकॉज आई एम ऑन रिकवरी। अब यही चीज मुझे इंस्टेंटली खड़े खड़े क्लास में करनी होती है ना, वुड हैव बीन सुपर एग्जॉस्टेड, सो दैट वे गुड प्रेजेंट, बट या। हो गया कि समझ में आया आपको आंसर पूरा इसका? अब फाइनली थर्ड पार्ट जा रहे हैं सेगमेंट के। जनरली जिस हिसाब से मैंने ये आगे का आपको दिया है ना, रियल टाइम ट्रैफिक सर्विलेंस थ्रू रेडार्स, तो आंसर ऐसा ही होता है थर्ड में भी। तो ये जो रियल टाइम सर्विलेंस है ना, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड कर दिया है मैंने। थर्ड सेगमेंट में क्या होगा, फाइनल आंसर डिलीवरी specific to the question asked.
ये थर्ड सेगमेंट आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन का। तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर पहले पार्ट में भी नहीं दोगे, दूसरे पार्ट में भी नहीं दोगे, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में दोगे पॉइंट टू पॉइंट आंसर। I'll give you one more example to understand the scenario. I don't know if you like movies or not. I don't know if you like watching things or not. But सबने एक आध मूवी तो लाइफ में देखी होगी. You see a movie, right? What matters in the movie is the final conclusion. What happens in the end. But वो 2 घंटे बाद क्यों दिखाता है? पूरा हमारे लाइफ का 1.5 घंटा 2 घंटा क्यों वेस्ट कर रहा है? सोचा कभी? Happy ending. It's not always happy ending. You know, these days people are making anything and senseless things also, like weird endings. But still, To increase the excitement level at the end of the movie. हो सकता है वो भी हो. Think. I'm not saying no, of course. So because we get curious to know that what exactly happened. We all get curious, of course. That's the kind of story we all like to hear or watch. To understand the climax, to hold the audience till last, I'm getting to answers on chat box. Yes. The only reason is, from where I can observe, is that we all go with an expectation that क्या होने वाला है, क्या होगा. We all know something or the other. Okay, this big actor is in the movie. He's doing something. Maybe he's a spy, or maybe he's going through a love story, or maybe he's going through some crime. But what's going to happen? We all want to know what's going to happen. It's always a question. And what's going to happen? The answer is, if we don't get the answer, we don't like the particular story. If we get the answer, we like the story. And if we are not satisfied with the answer, we don't like the story. Right or wrong? Think about it. Anyone who's thinking, हाँ यार सर सही बोल रहे हो आप. 2 लोग समझ रहे हैं. बाकी लोग को भी समझ आएगा. Because it is the best way to give an answer to a question, students. That's why. The way you give will determine whether you have done correct or not. And in the end, whether you give correct answer or not, that meets their expectation. But this is the best way to do it. Simple. Okay. So I'll say, Nukul, there's a story that I have. There's a story. There's a spy who's been, what do we say? There's a spy who, against all odds, fights a terrorist and succeeds into subduing him in the end and saves the country from a disaster. मिल गया आंसर? हाँ ठीक है, चलो मेरे पैसे बच गए, मैं नहीं मूवी देखना. अरे मेरे को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बोर हो गया मैं. ओ आई वुड लाइक टू सी हाउ दैट हैपेंस, डिपेंड्स. समझ रहे हो आप? बट स्टोरी तो नहीं पता ना आपको, कौन है क्या नहीं है. बट पिक्चर तो समझ आ गई आपको फिर भी. तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट. एंड देन द थर्ड एलिमेंट इज ओके, होता क्या है. एंड फिर आप चालू करोगे तो आपको 20 मिनट तो लग ही जाएंगे पूरी पिक्चर का स्टोरी समझाने के लिए अपने फ्रेंड को. उसमें भी उसका आधा ही ध्यान होगा, आपको पता है. हाँ. फाइनल आंसर डिलीवरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन. अभी यहां से चालू होगा. वन ऑफ द मोस्ट important
and widely used in our RT calls as well are VOR DME systems, where VOR helps in en route navigation as well as terminal navigation, including letdown service, holding service, and more. DME, which is most of the times co-located with VOR, gives range in nautical miles to or from a station and is frequency paired with VOR. Now, frequency pairing, a very complex topic, you're so subtly putting in this answer. They get to see your skill levels. They're like, oh, wow. Now, she is one student who deserves to clear the exam. Let's just test her more with a few more questions. वहीं चुप कर देंगे वो लोग आपको, आगे बोलने ही नहीं देंगे. अच्छा अच्छा बेटा बताओ, फ्रीक्वेंसीज बताओ, वीओआर का प्रिंसिपल बताओ, वीओआर के एरर्स बताओ, डीएमई का प्रिंसिपल, डीएमई के एरर्स बताओ. अरे वो तो मुझे आता ही है, वो तो मैं पहले ही रेडी था बोलने के लिए नुकुल. समझ रहे हो स्ट्रैटेजी? You control the environment. You make them do what works in your favor. And you are just a student doing all these things. Consciously नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग फॉलो करो, अपने आप हो रहा है ये सब. I had made up my mind that I'll share all my secrets in these sessions. हर सेशन में नहीं मिलनी है सीक्रेट सबको वापस, ठीक है? So you guys are very lucky, guys and girls. And they also like. It's a joke. Not a joke, just humor. For arrival, major radio nav instrument in use, instrument or equipment you could say, is ILS, which in itself has 3 segments to give 3-dimensional support to make aircraft land perfectly on its own. अभी चाहो तो तीनों सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कर दो, और नहीं तो आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऐसे ऐसे पॉइंट पे एक्सप्लेन कर सकते हो. अपने ऊपर है भाई. इट्स अप टू अस. वी ओन द स्टेज. वी आर द परफॉर्मर्स. इट्स अप टू अस हाउ वी परफॉर्म, what move we show. Like to maintain runway center line, we have localizer. Maintain safe rate of descent,
to have perfection in touchdown, we have glide slope, and to measure range from runway threshold, we have marker beacons. You can continue the same strategy explaining about more. Okay, all stations, what was the last thing you heard? I think we had a disconnection there. Nukul had frozen. And Nukul's screen had frozen. नुकुल बोला सर इतनी गर्मी में क्या बर्फ नहीं जम रही यहाँ पे मैं क्या जगूंगा. What was the last thing you heard? Please students, we are almost done. पे बताएगा मुझे नहीं पता मैं कब से. Sir, about marker beacons. So measure range from runway threshold. We have marker beacons. After that, either you continue about descriptions for other systems also, something that you've already done in part in the second segment of your answer. Or if you want, you can start exploring one topic of your choice in depth now, proactively, khud se. Two things will happen. Either they will let you speak or they will stop you and they'll give you another question related to what you are saying or probably something else. If they stop you and they ask you another question, focus on that question and use similar strategies to answer that question. Right now, let's continue with our answer considering they are not asking us to stop. कभी भी कोई आंसर दे रहे हो, आज जो आपसे आंसर्स पूछे हैं मैंने उसमें बोलने के बाद श्रीधर ओम आई थिंक forgive me if I'm wrong in taking names. I observed आपने आंसर दे दिया जहां तक आपको आता था, फिर चुप हो गए अचानक से और कुछ नहीं बोले. तुम्हें पास होना है, उनको तुम्हें पास नहीं कराना है, तो उनसे मेहनत की एक्सपेक्टेशन मत रखो. हम आगे बैठ जाते हैं इंटरव्यूअर के सामने. ओके बोलो, पूछो क्या पूछना चाहते हो. ऐसे नहीं बोलते ना. उन्होंने पूछा अच्छा अपना नाम बताओ. ओके अल्केश. अच्छा अपने बारे में कुछ बताओ. चुप तो नहीं रहोगे ना. बट क्या होता है हम लोग क्या बोलते हैं, ओके सो आई एम सो एंड सो, आई डू सो एंड सो एंड आई डू सो एंड सो. चुप हो गए. ओके वो बोलेंगे अच्छा. तो आप उनसे मेहनत करवा रहे हो आपसे और बुलवाने के लिए, तो वहां पे उनको बुरा फील हो सकता है. लाइक दे विल टेक यू नॉट देयर वेयर दे शुड टेक यू. अच्छा तो टेल मी अबाउट नैव इक्विपमेंट्स. वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट नैव इक्विपमेंट इज VOR एंड वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है. मैं तो नुकुल का आंसर ही याद करके एग्जांपल दे रहा हूँ. एंड
अच्छा, तो मैं क्या सोचूंगा, ये व्यूअर पढ़ के आया है तो व्यूअर बोल रहा है। ओके, तो व्यूअर का प्रिंसिपल क्या है? सो दे विल फर्दर ट्रबल यू, थोड़ा अंदर अंदर जा जाके देन ओके एक्सप्लेन व्हाट इज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके एक्सप्लेन व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सब आंसर आने चाहिए फिर हमें ऐसे हिसाब से। फिर अगर ऐसे आंसर दे रहे हो तो आपको ऐसे ही जवाब देने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस के, बैक टू बैक, फटाफट 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 फटाफट। या फिर यू ओन द सेशन, यू डोंट लेट देम स्पीक ओनली अनलेस दे स्टॉप यू एंड दे वांट टू स्पीक। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स। ट्रस्ट मी तो नहीं बोलूंगा बार बार, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। So here I'll take this moment and I will continue with my answer, explaining one topic proactively, continuing this answer. I hope you're understanding, okay? This is where it's gonna get over and then you're gonna give me a 30-second answer. All right? Ready students? सब ठीक है? Connectivity ठीक है? वर्बल चाहिए आज यार, आज वर्बल चाहिए। क्यों इमोजीज दे रहे हो आज? Affirm, sir. कोई तो दे रहा है कम से कम, बाकी लोग कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, ऑलमोस्ट Oh, देयर। Victor Tango Oscar Michael. Affirm Victor Tango Juliet Andrews. Affirm Victor Tango Sierra Mike Victor Sierra. Tango Alpha November Papa. Affirm Victor Tango Papa Romeo Kilo. सुबह से ये एक चीज मांग रहा हूँ आपसे यार, बार बार मांगने पे देने की क्या आदत डाल रहे हो आप लोग? डोंट बी लाइक दैट, ओके प्लीज। टाइम वेस्ट होता है उसमें यार। जब मेरा बोल के खत्म हो गया आपको एक्नॉलेज करना है। तो आई वुड लाइक टू talk about VOR in a little detail. ये भी कोई आंसर है नहीं, बट यू आर स्पीकिंग एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। So I would like to talk about VOR in a little detail. VOR stands for the full form. अभी आपको VOR पूछ रहे हैं तो VOR का आंसर भी आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे। VOR is one of the important nav aids, can be used for en route, terminal, VOR, let down, arrival, like let down, holding, and it is generally co-located with DME where they are frequency paired. If frequency paired, if you select VOR frequency, you'll also get your ranging in nautical miles for the station. ऑलरेडी जो बोले हैं वही पॉइंट्स आपको डायरेक्ट व्यूअर में भी ऐड कर सकते हो। सी इफ यू लर्न दिस वे यू आर रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। समझ भी रहे हो आपके पास क्या आ रहा है? इट्स लाइक व्हाट डू यू वांट फॉर गिफ्ट? ओके मेरे को आईफोन दे दो, मेरे को आईपैड दे दो, मेरे को कार दे दो, मेरे को बाइक दे दो, मेरे को स्मार्ट वॉच दे दो, कुछ भी मांग सकते हैं। और मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मैं सब ले लूंगा उस पर। What I'm teaching you right now, it's like that unlimited cash in hand that you have. जो चाहिए वहां यूज कर लो उसको। फॉरेन जाना है यूज कर लो, इन्वेस्ट करना है यूज कर लो, बिजनेस करना है यूज कर लो, पार्टी करनी है यूज कर लो। That is the training, students. Just follow it. So money is your biggest asset in that scenario. Here, what you're learning, the way you are learning is your biggest asset. एक हिसाब में तैयारी कर लो, you are ready for all sorts of exams. I would like to talk about VOR in a little detail. VOR stands for, and यहाँ पे आपको स्पेसिफिक सिस्टम्स का कैसे एग्जांपल देते हैं। सब पॉइंट नंबर फुल फॉर्म, पॉइंट 2 पर्पस, पॉइंट 3 ग्राउंड स्टेशन और
chart codes, that is nomenclature, and along with symbols, hexagon, VOR symbol, 3-letter codes, VOR symbol. Okay. And then you say frequency range, actual frequency range. पर्पस तो पहले ही बोल चुके हैं, वापस से वही रिपीट करना है. फुल फॉर्म हमें आता ही है, फुल फॉर्म परफेक्ट बोलना है आपको. ग्राउंड स्टेशन कोड्स बोल देने हैं, सिंबल बोल देने हैं, जो भी नॉमेनक्लेचर रिलेटेड है वो भी बोल देना है. फ्रीक्वेंसी रेंज से VHF मत बोलना, स्पेसिफिक बोलना. बाय द नेम इटसेल्फ वी नो VHF. Amongst VHF, the dedicated frequency is this. And then principle of working. VR works on the principle of phase comparison keyword. हर सिस्टम का एक एक कीवर्ड है आपके पास. We call it phase comparison because there are two signals. Then principle के बाद आप बोलोगे ऑपरेशन. नुकुल ऑपरेशन में आपका मॉड्यूलेशन आएगा 30 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड. डायरेक्ट ऑपरेशन मत बोलो. इट्स लाइक आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर मेरे को पेन हो रहा है, अरे सर्जरी के लिए डालो, सर्जरी के लिए डालो. नहीं ना, इतना जल्दी नहीं होता ना. टेस्ट होंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट होंगे, सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद ही समथिंग लाइक सर्जरी विल हैपन. 2-3 महीना लग जाता है सर्जरी तक पहुंचने के लिए ना. That being said, let's just bless everyone with good health in the world. Principle of working, operation. Okay. And operation के बाद, operation में क्या हो रहा है? Okay. Operation में आएगा kind of modulation, how it works, phase comparison कैसा होता है, and parts, that is ground station, onboard station, onboard equipment, ground station and onboard equipment. तो onboard आप इंडिकेटर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट, जहां आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलेटिव बेयरिंग इंडिकेटर, रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर, कोर्स डेविएशन इंडिकेटर, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर. जनरली ये 4 नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास. एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकता है. सब में VOR नहीं जाता है, एक में ADF है, बाकी में VOR ADF का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है आपको, या फिर VOR ILS भी मिल सकता है, मैग्नेटिक भी मिलता है. वो एंड में करना है आपको, लेकिन बट नेविगेशन आपने पढ़ा है तो कहीं ना कुछ तो पता है आपको. पार्ट्स, ग्राउंड स्टेशन, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट. ओके. और उसमें है ना आपका वो भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल. इट डजंट हर्ट टू जस्ट सी पिक्चर्स एंड स्टडी अ लिटिल बिट बेस कंट्रोल पैनल. ओवरऑल नॉट अ कंपल्सन राइट नाउ, बट मैं सारे एलिमेंट्स दे रहा हूँ परफेक्ट आंसर के. परफेक्ट आंसर एज इन एयरलाइन इंटरव्यू के बता रहा हूँ मैं आपको, समझ लो आप. तो वही बात हो गई ना मैराथन वाली. 5 किलोमीटर 30 मिनट्स में करने की प्रेपरेशन करनी नहीं है, उतनी होने के बाद 6 किलोमीटर 25 मिनट्स की प्रेपरेशन करनी है. उसको फेल सेफ बोलते हैं. टाइम है ना हमारे पास, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. हो गया. ग्राउंड स्टेशन, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट, कंट्रोल पैनल. उसके बाद हम डालेंगे मोड ऑफ प्रोपोगेशन. VHF है तो जनरली लाइन ऑफ साइट होगा, है ना, कॉमन सेंस. सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग नहीं पढ़ते हैं, डरते हैं, एमिशन कोड्स. बहुत इजी है, टेबल है उसकी. हर एक सिस्टम करोगे एमिशन कोड तभी याद कर लेना. 3 लेटर टू 6 लेटर कोड होगा. हाउ टू डिसाइफर, शुरू के 1-2 फाइनल प्रेप के सेशंस में आपको बताया गया है. नहीं पता, आता नहीं आता, ये सब के बाद मुझे बताना है, सर इतना तो मेरे को समझ गया, इतना नहीं समझ रहा, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे करूँ, मेरे से शेयर करो, मैं सब करा दूंगा आपको. फिर एमिशन कोड्स, errors, limitations. Okay. And additional points if any.
एंड ऑफ कोर्स लास्ट में आप बोलोगे टाइप्स, वीओआर के बहुत टाइप्स। स्टडी दिस राइट नाउ, टॉक टू मी। मेरा हो गया बोल के। VDU1 Victor Tango Oscar Mike Golf. सुचिता, थैंक्स। टाइप्स तो हमने बोल दिया है। एवरीबडी ऐड वन मोर पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ बेयरिंग्स, रीडिंग्स, जो भी हमें मिल रहा है उसकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास सी, 10% से लेके +-10 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक का अचीवेबल होता है जनरली ऑल सिस्टम्स, बट एक एक सिस्टम का अच्छे से कर लेना। द गुड थिंग इज जो पॉइंटर्स मैं दे रहा हूँ ना, समरी शीट्स है जो ऑक्सफोर्ड से हमने ली है इंस्पिरेशन, लाइक ऑफ कोर्स रेफरेंस, आप लोग को भेजा हुआ है। तो इसी कॉन्सेप्ट में वहां से भी आप पढ़ लोगे ना तो इजीली आपका हो जाता है। लाइक आपको पूरा 2-2 घंटा करके एक सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। स्केलेटन देख लो, पॉइंटर्स देख लो, और एक बार प्रिंसिपल समझ लो। सेशंस हैं, बहुत कुछ है, बहुत रिसोर्सेज है प्रिंसिपल समझने के लिए। एंड ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में एस्ट्रिक्स डाल के लिखो पोलार डायग्राम्स और रेडिएशन पैटर्न्स। ओके, पोलार डायग्राम्स और रेडिएशन पैटर्न्स वो आपको दिखाते हैं। एंड एक और चीज भूल गया मैं, प्रिंसिपल में ऑपरेशन में पार्ट्स में मोड ऑफ प्रोपोगेशन है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स डाल दो, रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंजेस कितनी आप ऑफर करते हो। मोड ऑफ प्रोपोगेशन में एस्ट्रिक्स डाल के रेंज भी ऐड कर सकते हो, रेंज भी कहीं भी ऐड कर सकते हो, कितनी रेंजेस अवेलेबल है। वीएचएफ है तो रेंज लिमिटेड होगी, एलएफएमएफ है तो रेंज ज्यादा होगी, कॉमन सेंस। एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑपरेशन में पोलार डायग्राम्स एंड रेडिएशन पैटर्न्स, बिकॉज एडीएफ में कार्डियोइड आता है, वीओआर में लिमाकॉन लाइमाकॉन करके कुछ आता है, एंड आईएलएस ग्लाइड स्लोप भी दो लोब्स निकलते हैं जिसमें से एक इक्वी सिग्नल आता है। दैट इक्वी सिग्नल गिव्स यू द ग्लाइड स्लोप पाथ 3 डिग्रीज और वॉट एवर डिग्रीज ग्लाइड एंगल एंड मेंटेनिंग द रनवे सेंटर लाइन। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना है पार्ट 2 वाइवा इंटरव्यूज में। टेक्निकल पॉइंट्स भी बोलने हैं, जनरल वे में भी एक्सप्लेन करना है। चलो स्टडी, आई एम शेयरिंग दिस नोट्स विथ यू ऑल वाया ईमेल इन द मीन टाइम बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट गोल्ड। अभी सबको देना है आंसर, क्वेश्चंस नहीं है तो सीधा आंसर्स देने हैं आपको। देख लो, पूछ लो, अभी भी चांस है आपके पास। 5 मिनट दे रहा हूँ मैक्सिमम, 2 मिनट में भी स्टार्ट कर सकता हूँ एक्सरसाइज। स्टडी दिस प्रॉपरली, आई कैनॉट सी ऑल स्टडिंग इट, सो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर स्टडिंग इट। बात ट्रस्ट की नहीं है, बात करने की है, हो रहा है नहीं हो रहा है बस।
Unreadable Victor Tango Oscar Mike Goal. Okay, sorry. Send हो रहा है. Of course, a few things that I've written on whiteboard, I spoke it correct, but I've just scribbled words like full spelling नहीं लिखी है. I know that. If you come across that, share a screenshot and बताना सर आप क्या खुद को डॉक्टर समझते हो, ऐसे लिखा है, इसका मतलब समझाओ. तो मैं उसका मतलब समझा दूंगा आपको. नकुल बोल रहा है ऐसे नहीं बात करूंगा सर मैं. दैट वाज जस्ट अ जोक, बट या कोई स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है बता देना. ऐसे ही मैंने शेयर किया, लाइक कुछ 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 चीजें मैंने बस ऐसे ही स्क्रिबल करी हैं, राइट. नहीं समझ आ रहा तो बताना मुझे. आ गया लगता है, ईमेल चेक कर लो, सेव कर लो. आरटी का जो भी आपको मिल रहा है ना ऑफलाइन, अपने फोन में फाइल्स में जाके फोल्डर बना लो, उसमें सेव कर लो सब कुछ. मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, स्पेसिफिक जो चीजें एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ. आराम से बैठ के इस चीज को स्टडी करके समझ लो. आपको करना है नहीं करना है ऑप्शन नहीं है. बहुत फायदे में रहोगे आप. पब्लिक स्पीकिंग आती है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. बी यू आर द बेस्ट ऑफ द पब्लिक स्पीकर्स अमंगस्ट योर peers or the worst. You all have to do this. If you already know this, show it to me so that we are on the same page. So that I know, अच्छा इसका तैयारी हो गया है. If not, show me इसका तैयारी नहीं हुआ है तो इसका तैयारी करवाएंगे, करेंगे साथ में मिलके. 2 more minutes. भले मैं टाइमर दे रहा हूँ 30 seconds का. इफ आई डोंट से स्टॉप यू विल हैव टू कंटिन्यू टिल द टाइम आई से स्टॉप. एंड इफ यू डोंट कंटिन्यू, इफ यू आर स्टॉपिंग, लेट्स से ब्लैंक हो गए हो, सैचुरेट हो गए हो, ब्लैकआउट हो गए हो, so would you want me to continue ahead, or is it okay if I just rest my answer here about this? मेरे को बोल सकते हैं, एग्जाम में ये चीज मत बोलना. एग्जाम में आप बोलोगे आंसर अदर थिंग्स आई एम एबल टू रिकॉल, बट जो आता है उसका बात लेके एक्सप्लेन करने लग जाओ. फिर उनको दिखाओ मत कि आपको फिर नहीं आता है वहां पर. अभी कुछ एडवांस स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको एक और. बट चुप नहीं रहना है, खुद से चुप नहीं होना है जब तक सामने वाला चुप नहीं करा रहा है आपको. वो चीज पे फोकस होना है, और जो सिखाया उस पे फोकस होना है. अभी दो चीजों पे बस, सिंपल. तो प्लीज चुप मत हो जाना. हम्म. गुस्सा आएगा बहुत मेरे को. एंड दूसरा है, जितना अभी पढ़ा है उस हिसाब से ट्राई करना है अपना आंसर देने का. ट्राई योर बेस्ट, enjoy it, और हंसते खेलते देना, एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड. दैट लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ की एलिमेंट. 1 more minute. One more minute. Sir, where can I find these emission codes? एमिशन कोड्स मैं देता हूँ आप लोग को. किसके किसके पास नहीं है एमिशन कोड्स? अभी दे रहा हूँ. कैरी ऑन विथ योर प्रेपरेशन. ओके, दे रहा हूँ एमिशन कोड्स.
Hmm. Ready? Okay. Who wants to start first? Proactive. क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप बस रेडी रहो. एनीवन? Suchita is ready. Anyone else? Only Suchita is ready. Jyotsna, how about you? Jyotsna is ready. Nukul is ready. Okay. Suchita, question for you. What are the communication systems carried on board the aircraft? Good afternoon, sir. Thank you for asking this question. So the communication systems that we have on board an aircraft, we have a lot of frequency bands, starting with very low frequency, and it goes up to extremely high frequency. So the radio part of the electromagnetic spectrum extends from 3 kilohertz to 300 gigahertz, and the communication systems that we have on board majorly use VHF and HF. VHF stands for very high frequency, HF stands for high frequency. VHF frequencies are starting from, so VHF frequency starts from 30 megahertz to 300 megahertz, and the voice communication frequency is from 117 megahertz to 137 megahertz. HF frequency, the actual HF frequency is from 3 megahertz to 30 megahertz, and the voice communication frequency is from 2.8 megahertz to 2 megahertz. These are the major communication systems that we have on board the aircraft. HF, we get FIR regions, flight information regions. We have 5 FIRs. India is divided into 5 FIRs, and so we get 5 radios. Then we have Delhi radio, Mumbai radio, Kolkata radio. Then we have Chennai radio, and we have Guwahati radio, which is Guwahati FIR is a sub FIR. So from ground level to flight level 265, we have Guwahati FIR, which is a sub FIR. And after that, the airspace is controlled by Kolkata FIR. Then we have talking more about VHF. VHF uses the propagation path, which is space wave. So VHF, we get line of sight range. We have the formula for VHF, which is range formula, which is 1.23 into square root of transmitter height plus square root of receiver height. HF uses ionospheric propagation, and so we have the formula as the formula differs. Correction. The another propagation path that we have is surface wave. LF and MF are the waves which are best optimized at this propagation path. And LF and MF, the range formula is over ocean, it is 3 into square root of transmitter, correction. I say again,
over ocean or over sea, it is 3 into square root of power, and over land, it is 2 into square root of power. We have this difference because more electromagnetic energy is found at the sea compared to the land area. And that is all I recall about the communication systems that we have. The communication systems are vast. And we have specific frequencies which are just allotted to civil aviation. And so that is how we get VHF and HF. And for radio communications, talking on civil aviation radio telephony network, we have HF and VHF. HF can also propagate through surface wave, but it is best utilized or optimized through ionospheric propagation. Ionosphere is a layer of hyperactive or superactive ions, which starts from 60,000 feet and it could go up to 15,000 feet. So it is found at higher regions, and we have different layers in ionosphere. We have the D layer, which is also called as the diffusion layer. Then we have E layer. Then we have F1 and F2 layer. So these Okay, so if you're talking about HF, tell us what happens during daytime and what happens during nighttime. Okay. So, sir, during daytime, the frequency that we use in daytime compared to nighttime, the nighttime frequency is half. We use half the frequency that we use in day at night because of ionospheric propagation, because of the diffusion of D layer after sunset, and the appearance of D layer. Correction, diffusion of D layer after sunset. So are and you say so we use different frequencies while communicating on HF during day and during night, and the difference is almost half. So which is more, the daytime frequency is more or the nighttime frequency is more? So the daytime frequency is more compared to nighttime. And how much is the approximate difference? So the difference could vary, but as per my knowledge, it could be from 2 to 10 megahertz is what I remember. What, 2210 megahertz? What? 2 Can you explain megahertz a to little? 1. So this is the So, actual. so if we have to say, that the HF frequencies used during night time are almost or approximately half of the HF frequencies used during daytime. So the difference being approximately half. Would you agree with that statement or not? Sir, I agree. So that is what we are asking. Yes, sir. Mm-hmm. Sir, And I this went happens ahead to because this happens because this happens because of ionospheric propagation and the diffusion of D layer after sunset. Correction, so how after does it sunrise. impact? How does it impact? Why does it change the frequencies? So because of the diffusion of D layer, the E layer, which is the next layer after D layer, is found at an higher altitude after sunset. So what happens? How does that happen? Higher altitude, okay, diffusion, okay. How does that happen? Why? How does it impact the variation in the frequencies? Sorry, sir, but I'm not able to get the question correctly. And maybe I'm not able to recall the exact concept. So think and give the answer. The question is Okay, sir. simple. The layer is changing or diffusing, fine. But why are the frequencies changing? You didn't explain how. Sir, give me a moment to think, recall. I'll tell you this. Yeah, we are waiting. We're not going anywhere.
Jyotsna, same question. Continue from here. How does that happen? Why is the frequency at night reducing because of whatever layer thing is happening in the ionosphere? Okay, Jyotsna is not responsive. Nukul, question transfers to you. How? Diffusion layer का समझ गया, but how? So because my critical ray was increased, so that's why. So due to increase in altitude in layer, so my critical ray will increase. So that's why the I use lower frequency frequencies, so basically Nukul has got the point. Yes. How do you read, Nukul? radio 5. Yeah, Radio yeah. 5. Very good. So because of the change in the altitude of the refracting layer, if we use the same daytime frequency, then it will overshoot our destination because of the critical angle if we keep the same angle. Now we don't want to change the angle because the ground stations are fixed. So we transfer a reduced frequency so that a lower energy frequency will be diffused and refracted from that layer, but give us the same range, not overshoot or undershoot my destination. That is why I reduce it. Very good, Nukul. You got the keywords. Simple. Critical ray, critical angle. बाकी रिलेशनशिप आपको प्रॉपर याद करनी पड़ सकती है, बट रात को कम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ, मैं ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी यूज करता तो मेरा क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता, वो ओवरशूट कर जाता. मतलब रिफ्रैक्शन मुझे ओवरशूट नहीं करना है या अंडरशूट नहीं करना है, जो भी केस होता है, तो मैं फ्रीक्वेंसी कम कर लेता हूँ, बिकॉज मैं बार बार क्रिटिकल एंगल नहीं चेंज कर सकता हूँ मेरे ट्रांसमिशन का फॉर आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन, बिकॉज ग्राउंड स्टेशन फिक्स्ड होते हैं मेरे. तो प्रीसेट फ्रीक्वेंसीज होती है, लाइक सुचिता सेड रेडियो के पास, उसमें से डे टाइम की दूसरी होंगी, नाइट टाइम की अप्रोक्सीमेटली हाफ अराउंड हो सकती है उसके. तो सुचिता, वेरी वेल आंसर गिवन, बट स्ट्रक्चर नहीं था, कीवर्ड्स नहीं था, रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा फास्ट थी. आपका माइंड इंटेलिजेंट है, फास्ट है, वेरी गुड. अभी आपको उनको कैसा चाहिए उसमें थोड़ा ट्रांसलेट करके अपने आंसर्स बनाने हैं, वो बेस्ट होता है. ठीक है. Yes, sir. सो राजधानी की तरह हम बोलते बोलते भी जाएंगे ऐसे. इट्स नॉट. Radio 1, Victor Tango November Kilo Charlie. वेरी गुड मॉर्निंग. All stations, how do you read? Radio 5. Victor Tango November Kilo Charlie. Radio 5 Victor Tango Papa Romeo Kilo. Radio Yeah. 5 Victor Tango Sierra Mike तो Sierra. सुचिता, आपने जो मैंने अभी सिखाया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लग नहीं रहा आपने प्रॉपरली उसको यूज किया है. आपको ये समझना है और बस एग्जीक्यूट करना है. नॉलेज है आपके पास, दिक्कत नहीं है, सब आता है आपको, दिक्कत नहीं है. जस्ट ट्रांसलेशन करना है प्रॉपर. ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं इसको, यहाँ से वहाँ. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस क्वेश्चन का. स्टूडेंट्स आंसर लिख लो, चाहिए तो स्लो जाता हूँ मैं. आइडल. सुचिता आप भी लिख लो जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ. आपने क्या आंसर दिया और मैं क्या दे रहा हूँ, कंपेयर करो एंड ट्राई टू बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस मच मोर. ओके. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मत बोला करो स्टूडेंट्स, नहीं अच्छा लग रहा है सुनने में इतना. ओके. एंड रेट ऑफ स्पीच स्लो रखो थोड़ी. सॉरी नहीं बोलना है.
आई डोंट नो नहीं बोलना है, एज फार एज आई नो नहीं बोलना है। लिख लो, ये सब तो ना ही है, नहीं यूज करने हमें ये सब हमारे कॉल्स में वर्ड्स। विल रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स कीपिंग द सेम मीनिंग। नोटेड एवरीवन? नहीं नोट कर पाए हो, टाइम स्टैम्प ले लो। 2.37.17 स्क्रीन के टॉप पे है टाइम स्टैम्प अपना। रिप्ले कर लेना कभी भी रिवीजन के टाइम, उतना ओपन ही रखा है प्लेलिस्ट। काम होना चाहिए बस, कैसे भी करो सही तरीके से। अब आंसर देखो। somebody asked the same question to me. 5 सेकंड हो गए यार। Can someone please ask this question to me? Question mark. Not What are the Suchita, not Nukul. What Yeah. are the different communication systems on an aircraft? An aircraft engaged in commercial operations has a mandatory requirement to fulfill. That requirement concerns with communication systems to be carried on board. Students लिखो, मेरे को देखना नहीं है, लिखना भी आप लोगों को। सुनना है, देखना है, लिखना है, सब फॉलो करना है, ठीक है? एक बार बोल रहा हूँ, मैंने कुछ मेमोराइज नहीं किया है, शायद बार बार सेम चीज नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? तो लिखो, ताकि किसी को रीडबैक चाहिए तो आप दे सकते हो। गुड थिंग इज वी हैव अ प्लेबैक ऑप्शन। बट आदत डालो इन सब चीजों की। The mandatory requirements as per DGCA rules, ICAO rules state that every aircraft has to be fitted with VHF and HF radio communication equipments as approved. And the underlying rule that guides this is under the rules of the Aircraft Act 1937. And that rule is, who will tell me the rule number? Can anyone tell me the rule number? Rule number 63. Rule 63. क्रॉस चेक करो। सिखाया ना आप लोग को रेगुलेशंस कैसे क्रॉस चेक करते हैं। आप मत करो, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। लिखो, इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 पार्ट 7 रेडियो टेलीग्राफी apparatus, rule 63 and rule 64. I say again, the aircraft rules 1937 पार्ट 7, पार्ट 7 को ब्रैकेट में डालो, नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा। The name of the main rule is radio telegraph apparatus and rule number 63 and 64. लिख लिया? रूल नंबर 63 का टाइटल है एयरक्राफ्ट फॉर विच apparatus is obligatory. Aircraft for which radio telegraphy apparatus is obligatory. Rule 63. I say again, Rule 63 title, aircraft for which radio telegraphy or telegraph apparatus is obligatory, that is mandatory. Rule 64 is deleted. Okay? कल को पूछेगा 64 क्या है सर, नहीं आता ही नहीं बोलना है सर, डिलीटेड। 63 है बस। अभी मैं बस सुना रहा हूं आपको रूल 63 क्या है। लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, कॉमन नॉलेज है। 10 सेकेंड में आप निकाल सकते हो नॉलेज वाया द वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू DGCA वेबसाइट। 10 seconds. Aircraft for which rule number 63, aircraft for which radio apparatus is obligatory. Point number 1. ये सिर्फ सुना रहा हूँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, मेरे आंसर में नहीं है, मैं वापस आंसर कंटिन्यू करूंगा।
all aircraft registered in India and required to be operated in accordance with VFR, IFR condition shall be provided with communication equipment. I'm reading it verbatim from the regulations, okay? Be provided with all the aircraft registered in India required to be operated in accordance with VFR or IFR condition shall be provided with communication equipment which is capable of conducting two-way communication at all times with those aeronautical stations and on those frequencies as prescribed by the appropriate authority. The communication equipment so provided shall be of a type approved by the airworthiness authority of the country of manufacture of the aircraft and should be acceptable to the Director General of Civil Aviation in India. Point number 2, an aircraft shall be provided with navigation equipment which will enable it to proceed in accordance with the flight plan and in accordance with the requirement of air traffic services, except when, if not so precluded by the appropriate authority, navigation for flights under the visual flight rules is accompanied by visual reference to landmark at least 110 kilometers or 60 nautical miles. ये regulations के लिए important है. Note, for this purpose of this rule, foreign registered aircraft falling under sub rule 3 of rule 1, तो आपको जाके देखना पड़ेगा क्या है वो rule, shall be deemed as aircraft registered in India, and Indian registered aircraft falling under sub rule 4 of rule 1 shall be deemed as aircraft not registered in India. This is not for you. For you, it is very important that rule number 63 tells you that every aircraft flying in India as per VFR or IFR has to have a system that will enable two-way communication at all times as on the frequencies prescribed by the relevant authority, and the system should be approved by the country of manufacture of the aerodrome, which should be acceptable by the regulatory authority of your own country. समझ बहुत जरूरी है इस चीज की. And not just communication, radio navigation equipment also, which will enable the aircraft to fly as per the flight plan safely and as per the requirements of the air traffic services. अब समझ में आया पूरा आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हो आप? ये रूल के वजह से सिर्फ, और हम लोग को रूल नंबर ही नहीं पता है. एटलीस्ट सुचिता को मेमोरी में रह गया बिकॉज आई नो आई हैव डिस्कस्ड एवरी पॉइंट एटलीस्ट इन पासिंग, लाइक बीच बीच में. तो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम का आंसर भी यहां से ही आता है, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है ना सुचिता, जो पूरा मिस किया है आपने. ध्यान दो इस चीज पे. योर बिगेस्ट लर्निंग इज दिस कंसेप्चुअल थियोरेटिकल. यू आर द बेस्ट, आई नो दैट. आउट ऑफ लेके आओगे आप नेविगेशन में, इतना भी यकीन है मुझे. अब ये स्किल्स डेवलप करनी है हमें बस. तो as per rule 63 of the Indian Aircraft Rules 1937, a two-way communication capable of communicating two-way all the time has to be installed on over the aircraft. As a pilot, I need to be able to operate the same as well, for which I need an RTRA license. ये तो आप बोल ही नहीं रहे आंसर में हम लोग कि हम सर वही तो करने आए हैं हम. This is the part 1 and part 2. So part 1 of the answer is this. मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरी क्या अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से. Okay. So based upon these requirements and based upon the communication systems, we use wireless communication, and the wireless communication is enabled through the use of radio frequencies or radio waves. सुचिता, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स रेडियो वेव नहीं समझा सकते बिना बताए कि कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस के लिए रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं. समझ रहे हो आप? डायरेक्टली मैं सर्जरी नहीं सिखा सकता हूँ किसी को. तो समझना है अपन को और अच्छे से करना है. इजी है. एक बार सीख गए ना आप बोलोगे सर मैं आपको कितनी भी फीस दे दूं कम है, आपने जो मुझे दिया है इसके बदले. ऐसा फील होगा आपको फिर. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं. Because I was lucky to have instructors like that. अभी भी मेरे को मेरे सारे इंस्ट्रक्टर्स के लेक्चर्स ऐसे याद हैं कि जैसे वो खड़े खड़े मुझे सिखा रहे हो. पता, नॉट ऑल कॉन्सेप्ट्स बट मेनी कॉन्सेप्ट्स. आई वंडर कहाँ है सब लोग. मैं हमेशा सोचता हूँ आज क्या कर रहे होंगे वो लोग. पढ़ा रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे. ऑफ कोर्स फैमिली होगी. जब हम पढ़ते थे तो वो सब ऑलमोस्ट लाइक दे वर रेडी, यू नो, लाइक
So then I'll continue with the second part. Second part मेरा आ गया radio waves पे. So as per the availability, as per the propagation paths, as per the properties of the radio waves in use, the best type of radio waves to be used for communication system depends upon the frequency table of radio waves. The frequency of table of the radio waves start with very low frequency and is categorized in a range based upon the common things in their propagation, the way they behave. So for communication on board an aircraft, we are using frequencies from two frequency bands in the table. The two frequency bands in the table are HF high frequency that has a range of 3 megahertz to 30 megahertz, and VHF that has a frequency range from 30 megahertz to 300 megahertz. Based upon these two frequency bands, specific range of frequencies allocated to civil aviation. कौन बोलेगा रेंज मुझे HF and VHF की? जिसने जिसने एक आध बार एग्जाम दी है, ये वेरीफाई किया है हमने लास्ट में. दोनों का रेंज है, स्पेसिफिक रेंज. HF का 2 से स्टार्ट होता है, 3 से नहीं, जबकि 3 आता है हमारा HF रेंज स्टार्ट होने से. Then you'll talk about the actual range of the frequency used. नहीं पता तो ढूंढना ये चीज, कम ऑन अपने नोट्स में, ये नहीं दूंगा अभी मैं आपको. And then I continue with my answer to give specific. Final third point. Third point मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे? So based upon the propagation in atmosphere, HF propagates to long distance via ionospheric propagation. So we use HF for long range voice communications. And VHF, based upon its propagation, direct wave or space wave, line of sight, gives us short range communication systems. HF long range is prone to interference, absorption, static, so it's not as clear in audio as much as VHF. VHF also has certain limitations. The range of HF communications can be determined by the formula, where the range varies if the frequency is transmitted over the sea or the land. Over sea, the formula is power into square root of 3 into power of square root of power, and 2 into square root of power over land. The difference being because sea surface has added electromagnetic energy that enables the waves to travel at a further distance. VHF, on the other hand, the range can be determined by the VHF range formula, that is 1.23 into square root of transmitter height in feet plus square root of receiver height in feet. On board the aircraft, we have, in basic commercial jetliners, we have two HF systems, HF1 and HF2. One can be used primarily, second can be used as a standby. And VHF, in general, we have at least 3 systems for any commercially engaged jet aircraft. VHF1, VHF2, VHF3. The control panel of these systems is pretty simple to use. We get rotary knobs to choose the frequencies of our desire. And we also can set a standby frequency, and we can always rally between 2 frequencies with a single switch, standby. Similar is the control panel for VHF. The audio control panel is combined. We can always choose HF, VHF, or intercom, or ground staff, and all. Whoever we want to talk to. All these different communication systems are connected individually, but to the same microphone and headset. Of course, these communication systems are having modulation. HF com modulation is this, VHF com modulation is this, and these are the emission characteristics. These emission characteristics show us this is the kind of modulation and this is the kind of signal sent. In order to communicate over HF or VHF, I, as a pilot, need to be proficient in radio telephony, for which I need to prove myself by having acquired the RTRA license, for which I am here today. Without that, even having a private, without that, even having a CPL and type rating, I'm not allowed to fly because of that particular rule and associated rules.
So these wireless communication systems actually, along with the knowledge of radio telephony, keeps the communication systems perfect, organized, crystal clear, free of miscommunication, and fulfilling the rules or requirement of the rules issued by ICAO DGCA, Indian Aircraft Rules 1937. If they are not asking me to stop right now, the examiner, because किसने पूछा तो मुझे अनन्या ने चुप होने नहीं बोला है मुझे अभी तक. So I'm still continuing, right? That was the idea of the exercise. So sir, just like any other radio system, comm systems will also have an antenna. So HF antennas are located here and here. HF1 will have a separate antenna, HF2 will have separate antenna, and VHF will also have separate antenna. So we'll have VHF1, VHF2, VHF3. HF frequencies generally will be reported in kilohertz, while VHF frequencies will be reported in megahertz. So frequency readout is also very important in communications. You talk about that. Whatever comes to you, slow and steady. You don't have to rush. You don't have to force answer. क्या हो रहा है हम फोर्स कर रहे हैं हमारी नॉलेज उनको शेयर करने के लिए नहीं. Just wait some time. Go slow. Your mind is smart enough. Your training is there to kick in the perfect answer. Go with your instincts. If you have attended a lot of my training sessions, trust me, go with your instincts in the exams. So that sums up the communication systems carried on board the aircraft. Along with voice communications, we also have data link, CPLDC. Although that is not much a part of the CPL or RT syllabus, but then we can communicate in procedures similar to voice communications, but with different codes through the data link via the onboard computers in a text form. But yes, VHF, HF are the main comm systems. If still Ananya, the examiner is not asking me any other question, I can still continue. Now I can put in the FIR and all. So depending upon where we are, where the aerodrome is, airspace are also qualified with respect to which ATC will take care of which part of the aircraft, what flight level. So for HF, generally the ATCs are what represents the FIR regions, and the call sign is always radio. So in India, if you're communicating on HF, generally, we will have only 5 different ATCs to talk to. They would be as per the 5 FIRs, one of which is a sub FIR. अनन्या थोड़ी देर में प्लीज रहम करना मुझ पे और प्लीज बोल देना चुप होने को. थक गया हूं मैं, बट आई कंटिन्यू लिटिल मोर ताकि आप लोग के आंसर समझ आए पूरा. इट वाज अ जोक. सो Mumbai radio if the aircraft is in Mumbai FIR, Delhi radio if the aircraft is in Delhi FIR, Chennai, Kolkata, Guwahati. Plus, the HF frequencies will be underlined by RADRA, Regional Domestic Air Routing Areas, and Flying International Major World Air Routing Areas. This will be for HF. While communicating on HF, every aircraft will have a unique or shared cell call code. And now start talking about cell call. Cell call is one such genius code in VHF where the pilot is relieved from the constant frequency monitoring load by just having a system where whenever an HF radio wants to talk to the aircraft, they can feed in the right code in the system as designed, and the pilot matching the code of the aircraft will be getting an indication that the ground station is calling, and can just raise the station and talk. So that's how HF communications take place with cell call, relieving the constant frequency monitoring mental workload in the cockpit. VHF doesn't have any such cell call type system, but VHF ATCs can vary. Major aerodromes generally have variety of different air traffic controllers helping with different operations. Ground, tower, approach, control. Then we also have broadcast frequencies to give us information with respect to weather reports, air report, ATIS, DATIS. They all form a part of the communication system. Then we have interpilot frequencies where two pilots want to not occupy the main frequency but still want to communicate with each other. So you see, we have a perfect system of communication because communication is the key to successful operations and to maintain our flight as per the flight plan.
If you are stopping, you end with the mic drop moment. तुम्हारे बोलने से पता चलना चाहिए अब तुमने खत्म कर दिया. ये नहीं बोलना चाहिए ओके सर आई एम डन विथ माय आंसर नाउ. So that's how the communication systems in the aircraft are. If possible, just look them eye to eye. जिंदगी भर याद है डर जाएंगे आप सब लोग. Understood? Suchita, do you understand the differences? Yes, sir. Class understood? Anyone? Any questions? अभी आपको लग रहा होगा ये आंसर आधा घंटा चला है बट इतना टाइम नहीं लगता. Anyone like the answer, didn't like the answer? Share your feedback, everyone, one by one. Sridhar, what's your feedback? आंसर कैसा लगा आपको? सर यस सर, मुझे जो आपने पैटर्न अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले उसके जैसे ही लगा, बट वाइल सियारा माइक वाज गिविंग द आंसर तभी मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा भटक रही है वो, मतलब जिस जो कंसेप्ट पे देना चाहिए था उससे थोड़ा साइडवेज हो रहा है आंसर. तो मैं ना ऑब्जर्व तो कर रहे हो बट खुद की ऑब्जर्वेशन की ही बात शेयर करो. सिर्फ कोई भटक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट या अपनी बात करो और मेरे आंसर की बात करो. आपको वो मौक नहीं हो रहा है कि आपको ऑब्जर्वेशन पूछिए किसी और की, है ना? सो अपनी बात करो, अपने लेवल पे बताओ आप क्या समझे और आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे थे. आप भटकोगे कि नहीं भटकोगे, आप भटक रहे थे पहले कि नहीं भटक रहे थे, उसकी बात करो. दूसरे बच्चे क्या बोल रहे हैं वो अभी फिलहाल आपको पूछ नहीं रहा हूं मैं. समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो आंसर क्या करना है अच्छे से करो, अपनी बात करो और मेरे आंसर की बात करो, समझ की बात करो. कंटिन्यू फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. ओके सर, सो अगर मैं भी देता आंसर तो फिर मैं भी ऐसे स्टार्ट करता कि ऑल द एयरक्राफ्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द रूल 63. और फिर जो एचएफ और वीएचएफ के लिए इम्पोर्टेंट है जैसे उनका वर्किंग प्रोग्रेस है मैं वो एक्सप्लेन कर देता कि एचएफ यूजेस स्काई वेव प्रोपोगेशन. नाइट में उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग रहती है, डे टाइम में उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहती है. बस 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 अच्छे से दोबारा से ये पार्ट को समझ के आपको स्टडी करना है. आप डायरेक्टली अगर डे एंड नाइट का मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो इतनी जल्दी तो कुछ सही नहीं कर रहे हो. समझे? बट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो क्या लग रहा है आपको? यस, आई एम गेटिंग द पॉइंट. वेरी गुड. Ananya, same question. Feedback on the way I have answered and how do you feel about it? Do you understand, not understand? Quick. Yes, sir, I understood Is it- everything. Do you think answer is good? Do you think you can do it? Do you think it makes sense? Yes, sir, I can do it. I just need to study part 2 in depth. So, like, I would be able to do it. Nukul. Yes, sir. So I understood the way we have to give the answer, and we need to mention requirement as a requirement. I'm not aware of these things like terminal navigation system. We need to add this and arrival navigation ads, letdown services. Never so I understood this. Okay. Rohita. I understood, sir, but I have to revise once again. I mean, I have to start see the video once again. आप है ना अगर बाकी रिवीजन पे सब डाल दोगे ना तो अभी जितना पढ़े भी हो उस पे से भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा. तो प्लीज टेल मी अभी तक का क्या है, फ्यूचर का छोड़ो. अभी क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आंसर कैसा लगा, डू यू अग्री विथ इट और नॉट? गिव मी दोस थिंग्स. Yes, I agree with what you said in the answer, and I think it's more than enough to convince the interviewer. I mean, the
convince the sir too that I have the enough knowledge to get with it. I like the smile. That tells me you're confident. Very good. Oh my God. Bolo. Yes, I understood all the what you have said, but at sometimes it was bouncer for me. कंटिन्यू. ऐसे चुप क्यों हो जाते हो तुम दो शब्द बोल के? कितना उस पे तो प्रवचन मिला है आज 1 घंटा. चुप नहीं हो जाना है ऐसे. कंटिन्यू. अभी समझ नहीं आ रहा है सर क्या बोलूं, मतलब क्लास में हो कि क्लास में नहीं हो? हो सर. क्या कर रहे हो? चैटिंग वैटिंग चल रही है लगती है तुम्हारी. नहीं प्लीज नहीं सर. स्टूडेंट्स डोंट मल्टीटास्क. बहुत लकी हो, आपको इतना अच्छा लाइव सेशन मिल रहा है डेप्थ में आरटी के. ठीक है. गुस्सा आ गया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ टाइम बैन कर दूंगा मैं. वो 1-2 दिन के लिए ही होगा सिर्फ. बट तुमको तो बुरा लग जाएगा ना, फिर तुम खुन्नस में लाइफ टाइम इग्नोर करोगे, उसका क्या फिर? मेरे पास इतना टाइम नहीं आके मनाऊं और गाना गाऊं तुम्हारे लिए, है ना? बाउंसर तो जाएगा ही, ध्यान नहीं दोगे तो. इट कैन बी दैट यू आर हंग्री ऑल्सो, इट्स फाइन, बट स्टिल नॉट द आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग. नॉट द वे यू शुड एक्सप्लेन हाउ यू फील, बट यू विल गेट देयर. श्रीधर, तुम्हारा हो गया? यस सर. प्रेरित? यस सर, गॉट ऑल द पॉइंट्स. लेक्चर के शुरुआत में थोड़ा नर्वस था, पर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है. इस पैटर्न में 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करूंगा तो शायद स्ट्रांग हो जाएगा. खुद से चुप होने की परमिशन नहीं है ना प्रेरित? उस पर भी काम कर लो थोड़ा. यस सर. मतलब करके दिखाओ अभी. और कुछ पॉइंट्स ऐड करो जल्दी. शेयर योर माइंड इज व्हाट आई मीन. सर आपका आंसर बहुत अच्छा था. बस मुझे वही मेरी तारीफ सुननी थी बस. थैंक यू. कोई तो बोला. सुचिता, योर माइंड. Yes, sir. Sir, पहले तो है ना, sir, आप भी हाँ. आप भी वो कौन था हमारा, बोल रहा था भटक गए थे, उसको बोल दो आप भटके कि नहीं भटके. उसका एनालिसिस कैसा था उसको पहले बताओ. एनालिसिस एनालिसिस कैसा था? सही था कि गलत था उतना बता दो. No offense, but मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे माइंड में, तो ऐसा होता है कि अभी नहीं बोलेंगे तो शायद वो पॉइंट चला ना जाए. और सर वो रेट ऑफ स्पीच का ऐसा है ना कि मैं खुद से पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो वो समझा नहीं कि थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए. और बाकी सर वो जब स्टार्टिंग में आपने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे ये 3 पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे आंसर्स करने हैं, तो तब मुझे समझा, तब ये भी समझा कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें स्टार्टिंग में ही नहीं बोल देनी है, वरना फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब अगर एग्जामिनर का ध्यान नहीं है या कुछ नहीं है तो फिर वो होगा कि मेजर पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, फिर माइनर पॉइंट्स बोलेंगे तो उसका कुछ ज्यादा वैलिड नहीं रह जाएगा अगर पढ़ के भी गए तो भी. तो तब वो मुझे समझ गया था, पर फिर जब मेरे को बोलना पड़ा तो फिर वो फटाफट में ऐसे निकल गया, क्योंकि आदत नहीं थी कि ये ऐसे करना है, फुल फॉर्म पे जाना है, फिर पर्पस बोलना है, फिर धीरे 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 जाना है. तो सीधा जो स्टार्टिंग में मेन था VHF HF आया मेरे दिमाग में, और मैं उसके बारे में सब बताने लगी और रिलेटेड चीजें जो भी उस टाइम पे आया. और वो एयरक्राफ्ट रूल्स एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशंस का बेसिस ही रूल्स है. और थोड़ा सा आईका और DGCA के बारे में भी बता सकते हैं कि इनकी वजह से ऐसे रूल्स भी बता सकते हैं. वेरी गुड. थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग चाहिए सर. बस बस बस. एक ही दिन में नहीं करना, टाइम है. वेरी गुड. हाँ सर. वेरी वेल सेड, वेरी वेल रिप्लाइड. एग्जाम में बस इंग्लिश में बात करनी है, सेम है बस. बाकी वेरी वेल स्पोकन, लाइक वेरी नाइस. आई कैन सी ओनरशिप, स्ट्रेंथ, प्रेपरेशन. वेरी गुड. ज्योत्सना, शेयर योर माइंड.
Sir, it was very well executed, but as an individual, I will be taking some time to structure the answers. I will be taking some time. अभी कितना समझे हैं उस पे फोकस करते हैं. टाइम लो, अपने पास है टाइम, कोई इशू नहीं है. So, currently, I have understood everything. The answer was perfect. You agree with what's happening, you think it makes sense and it's Of course. doable. Doable है आपके लिए. Affirm, sir. Very good. Anybody wants to share some more of your feedback और थोड़ी और तारीफें? Okay. Check your email, everyone, quickly. I've shared a PDF. Ananya, tell me, what do you see on the third page of the PDF? Suchita, you tell me, what do you see on the first page of the PDF? And Sridhar, you tell me, what do you see on the second page of the PDF? Quickly. Sir, on the first page, we have frequency bands from very low frequency to extremely high frequency. In this table, everybody, first page, in the last column, you can also see which systems use which frequency band. It's a very interesting table that gives you a lot of information with respect to systems and the way you can answer about systems or draft your answers. Wavelength you don't have to memorize. Wavelength you can always find out through calculations. And wavelength, अगर frequency बढ़ रही है तो wavelength कम ही होते रहेंगे, आप देखोगे. एक चीज इंक्रीज हो रही है frequency तो wavelength डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है. तो लो frequency के हायर wavelengths होंगे और हायर frequency के लो wavelengths होंगे. So on the third page, there is the emission characteristics table. Check if you can find out. Wait. Ananya, very happy to see proactively आपने चैनल ओपन देखा है, आंसर दे दिया. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मैं सुबह से आप लोग को डांट रहा हूँ करने के लिए या पुश कर रहा हूँ करने के लिए. आपको काम है, बोलना है, चुप हो रहा हूँ, बोल दो. Ananya, excellent. This is exactly the kind of expectation I am having with you all with respect to acknowledgement and communication while we are having these final sessions. सिलेबस हुआ नहीं हुआ उससे डरो मत, आप हो जाएगा इवेंचुअली. ये सेशंस फिर बाद में अपने आप किक इन करेंगे. इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट रेडी फॉर दीज सेशंस, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू नॉट टू अटेंड द सेशन. ऐसा जस्ट गो विद द फ्लो. सो वेरी गुड अनन्या, वेरी हैप्पी. सो या एमिशन कोड्स मिल गए, एक बार देख लो. इफ आई टेल यू a system has an emission code of A3E. अनन्या, A देखो क्या है, 3 देखो क्या है, E क्या है, और तीनों का जो डिस्क्रिप्शन है A3E सीक्वेंस में मुझे डिस्क्रिप्शन बताओ. Sir, can you say again? I got confused. Read the table. A का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? A, the letter A in the table. Amplitude modulation. 3 का क्या है? 3. Single channel containing analog information. E का क्या है? Telephony including sound broadcasting. आपके सारे जो सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, HF, VHF, नेविगेशन सिस्टम्स, रेडियो, दे ऑल आर यूजिंग रेडियो वेव्स, राइट स्टूडेंट्स? सारे रेडियो वेव्स बिना मॉड्यूलेशन के तो जाएंगे ही नहीं स्टेशन से बाहर. तो कौन सा मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है? वो एमिशन कैरेक्टरिस्टिक कोड के फर्स्ट लेटर से पता चल जा रहा है आपको. सेकेंड कोड से पता चल रहा है सिंगल साइड बैंड है, डबल साइड बैंड है, डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है. एंड थर्ड लेटर या थर्ड कोड से पता चल जा रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ द कोड, कि इन्फॉर्मेशन कैसी है आपकी. वॉइस जा रहा है तो वॉइस कम्युनिकेशन में यूज होगा आपका. एडीएफ में भी अगर वॉइस जाती है तो A3 आ सकता है. तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग कोड है. ये पूछते हैं पार्ट 2 में, एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं आपसे. लॉजिक समझ है अनन्या? एमिशन कोड क्या होते हैं, एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स? Affirm. Victor Tango Alpha Alpha. 2 सेकंड पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और अभी देखो कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं? बोलो A9 विस्की. कौन ट्रांसलेट करेगा? A9 विस्की, अल्फा 9 विस्की, A9W, A9W. देख के बोलो ना टेबल में, थर्ड पेज ऑफ द PDF. ओम, तुम बताओ, A का क्या है, 9 का क्या है, विस्की का क्या है? It has amplitude modulation, double sidebands.
Niner has a composite system with one or more channels containing contacts or digital information together with one or more channels containing analog information, and whiskey has a combination of the above. जो भी है That's it. सारे, हाँ सारे मल्टीपर्पज हो गया ये तो. वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विल कैन हैव द कोड अल्फा नाइनर विस्की. अच्छा, जनरली जनरली 6 डिजिट के कोड भी आते हैं एमिशन कोड पे. सो इफ द फर्स्ट 3 लेटर्स आर N0N, November 0 November. रोहिता डिकोड November 0 November. Emission of an unmodulated carrier, and 0 is no modulated signal, and November is no information transmitter. सीधा कैरियर भेज दिया, कुछ नहीं है उस पे. सिर्फ वैसे भी कुछ होते हैं NDBs माइट बी लाइक दैट. हिंट दे रहा हूं, सिर्फ पता चलेगा आपको. वेरी गुड. एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड हाउ टू डिकोड और डिसाइफर दीज एमिशन कोड्स. एक आखिरी चीज बची है सर, कौन से सिस्टम का कौन सा कोड है. वो आप जब अपने नोट्स पढ़ रहे हो वहां मिल जाए तो एक लिस्ट बना लेना, ना मिले तो बता देना, लिस्ट मेरे पास है मैं दे दूंगा. सिंपल. एनी डाउट्स? Negative, sir. Oh, very quick response. Negative, sir. End with the Victor call Tango sign. Papa Romeo Kilo. हाँ श्रीधर, वेरी क्विक रिस्पॉन्स, आई लव्ड इट. बस कॉल साइन भी दे देना है, भूलना नहीं है श्रीधर, एग्जाम आ रही है हमारी. Sir, so in the Viva, they can like give me a code and I have to decode it. 2 ways, yes. Either they'll tell you A3 किसका कोड है, आपको पता चल जाएगा ADF है, VOR है, क्या है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देना. दोनों चीज कर लेना. वो दो में से एक ही चीज पूछेंगे. या तो पूछेंगे VOR का एमिशन कोड क्या है, या फिर पूछेंगे एमिशन कोड्स होते क्या है. बस एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स. 4 ही तरीके आंसर्स पूछने के. So you don't have to memorize the table first. You understand the description, how to describe what are emission characteristics. Then you memorize the actual codes for every system. Every system has a unique code that tells you about the entire propagation technology that we are using and the kind of signals that can be transmitted. Like one of the codes, if you see in the last table, last section of the table, one, it talks about television also. वीडियो, जो अभी हमारे वीडियो जा रहे हैं ना एक दूसरे के पास, वो वही कोड बेस्ड है या थोड़ा मॉडिफिकेशन वो कोड का. तो जूम इज यूजिंग दैट. तो जूम के जो टेक्निकल आप ब्लूप्रिंट देखोगे ना, उसका भी एक एमिशन कैरेक्टरिस्टिक होगा जो उसने ITO से अप्रूवल लिया है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से. भले हमारे लिए इंटरनेट यूज हो रहा है, बट दे आर यूजिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. इसीलिए तो एक लिंक और एक मीटिंग ID हमें मिलता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो probably either using a different set of frequencies. Although internet is through wired cables, वायरलेस तो हमारे ये राउटर्स वाउटर्स कर देता है, बट स्टिल समवेयर फ्रीक्वेंसीज आर स्टिल देयर इन दोज वायर्ड केबल्स आल्सो. जैसे टेलीविजन के अलग अलग चैनल होते हैं, है ना. सो दिस एमिशन कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिवर्सल. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा बेसिक रेडियो वेव थियरी कर लोगे, प्रोपगेशन कर लोगे, सिस्टम थियरी कर लोगे, फिर वापस इस पे आओगे आप, बोलोगे हाँ सर ये वो क्लाइमैक्स है, ये बेसिक रेडियो वेव प्रोपगेशन थियरी का. Anything else on your mind, students, would like to discuss, ask, share related to this? 1-2 minute और दे रहा हूँ, let's discuss. Finally, I think you're getting into the mojo. Mojo is rhythm, good rhythm. लिखो, VHF radio telephony has a designation. VHF radio telephony communications have the designation A3E. जिसको साइड बैंड्स नहीं पता है, आपका जब पार्ट 2 में मॉड्यूलेशन होगा आप साइड बैंड समझ जाओगे बेसिक. वो उसके बाद अगर आप कुछ नहीं समझ रहे हो तो मुझे बता देना. एंड जीनियस स्टूडेंट्स, जीनियस ये है यहाँ पे कि ये सब नेविगेशन एंड ATPL नेविगेशन पे तो डेफिनेटली आएगा आपको, सिर्फ RT के लिए नहीं आएगा.
और चलो तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर रहा हूँ। अभी जो भी आप फोल्डर बना रहे हो अपने डेटा का, ऑफलाइन जो मैंने बोला है, उसमें ये स्क्रीन अभी जो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको रीनेम करके एग्जाम्पल्स ऑफ एमिशन कोड्स रीनेम कर दो फाइल को, कि कभी भी सर्च कर सको अपने फ़ोन पे, ढूंढना ना पड़े बार बार। या मुझे व्हाट्सएप पे रीशेयर कर लो कि आपको व्हाट्सएप डॉक्स में तुरंत मिल जाएगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव दिस ऑन योर फिंगर टिप्स, बिकॉज एक साथ मेमोराइज करना मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा आपको, विथ प्रैक्टिस बोलूंगा। जब जब जो सिस्टम कर रहे हो ये शीट को खोल के रखो, देखते रहो, पिक्चर मेमोरी बन जाएगी अपने आप, रटना नहीं पड़ेगा। यू नो आई एम अगेंस्ट रटोफाइंग वेर इट शुड नॉट बी रटोफाइड, लाइक मगिंग अप, है ना। सो टेक्निक्स है, डरो मत, प्रेशर मत लेना। VHF फ्रीक्वेंसी टेबल एंड जो फ्रीक्वेंसी टेबल है दैट शुड बी कंप्लीटली एग्जैक्टली प्रिंटेड इन योर माइंड। धीरे धीरे काम करो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में मेमोराइज मत करना। डेली उसको देखने का, डेली 10-10 मिनट ये दो चीजें देख लो, 5 दिन में आपको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी वो चीज अपने आप, बिना किसी एफर्ट के। एफर्टलेस स्टडिंग होती है ये। रेगुलर स्टडी इज एफर्टलेस स्टडिंग, रिविजन इज एफर्टलेस स्टडिंग। ये सारी टेक्निक यूज करो कि आपको बहुत कुछ करना है ना, सिर्फ यही तो नहीं करना। चलो ये लास्ट चीज है, स्क्रीनशॉट के बाद सेशन खत्म कर रहे हैं। कुछ और चाहिए तो बता दो उसके पहले। कल टुडेज 12th राइट, कल 13 था ना। टुमारो विल नॉट डू RT लाइव, सो अनलेस अदरवाइज इन्फॉर्म्ड इफ देयर इज एनी सेशन और नॉट, कर कोई लाइव सेशन नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी करो, कुछ चाहिए नहीं चाहिए मेरे को बता देना। ओके। गुलशन है नहीं, मनन है नहीं, तो श्रीधर नेक्स्ट लाइव में आपका मॉक लेंगे इफ यू आर रेडी। तो अपना अब तक का कितना प्रेपरेशन हुआ है मुझे अपडेट दो। एवरी स्टूडेंट विल ड्रॉप मी एन अपडेट। एक दो ने मुझे रियल क्लास में भेजा है, रोहिता ने, वेरी इंप्रेसिव, आई लाइक दैट, वेरी प्रोएक्टिव, जब मांगा तभी दे दिया ब्रेक में। अभी सब लोग मुझे अपना RT अपडेट दे दो अभी, चलते चलते खत्म होने से पहले। तब तक मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। लेट मत करना, आप भूल जाओगे फिर। कितने लेक्चर हुए, कितने बाकी है, G22 एंड देन पार्ट 2, बस इतना ही मेरे को प्रोग्रेस चाहिए आपका। सिलेबस हुआ ही नहीं हुआ, एक बार समझ आ जाए। एंड उसके बाद जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, आप चाहते हो मैं सिखाऊं, उसकी लिस्ट। स्पेशली सीनियर्स की बात कर रहा हूँ क्लास में, यू नो हु आर सीनियर्स राइट। सीनियर्स को पता है कौन सीनियर्स है। ये ले लो, सब कुछ है इसमें, जितना आपको फिलहाल याद रखना है। फर्स्ट लाइन सेज फॉर एग्जाम्पल, VHF रेडियो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हैव द डेजिग्नेशन अल्फा 3 एको। जब अनन्या डिकोड कर रही थी तभी बोला शायद ये VHF का हो सकता है। देखो अपने आप दिमाग में आ जाएगा आपके, एंड ऑफ कोर्स ये VHF का ही है, बट द गेस वाज सो एक्यूरेट। आपको लगेगा सर आप थोड़ी गेस करते हो, मैं बोला ये गेस नहीं होता है, दिस इज जीनियस। कहाँ गया, दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन सबको। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और एक भी लाइन नहीं मिस होनी चाहिए। रेफरेंस टू द टेबल गिव्स द फॉलोइंग ब्रेकडाउन, इसलिए आप टेबल साइड में रखो, ये स्क्रीन पे देख लो, ऐसा मेरा इरादा था आपके पास दोनों हो, कंपेयर कर सको आप। ए इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइड बैंड, तो VHF में दोनों साइड बैंड जाते हैं। अभी क्या होगा ना, एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे, अच्छा सुचिता ये बताओ, सुचिता टेल अस, VHF में डू वी कैरी सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड। सुचिता बोलेगी ऑफ कोर्स, आई वुड से इतना मैंने पढ़ा है, इतना मैंने पढ़ा है, बट ये कैसे नहीं आता मुझे, ये कैसे रह गया, इतना डेप्थ में कौन पूछता है। एंड देन फिर हम बोलेंगे यार बहुत डेप्थ में पूछा यार मेरे को, ऐसा ही फील होता है हमें। जबकि रियलिटी होती है कि शायद हमें आंसर पता होता है, बस हमें वो कीवर्ड से रिलेट नहीं किया होता हमने वो आंसर। तो ये एमिशन कोड्स पढ़ लो, ये सारे आंसर्स, क्या दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप क्लियर कर जाओगे, एमिशन कोड्स आपको बेसिक सिस्टम्स के याद रहेंगे, तो जो बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा आंसर देना। जबकि इंफॉर्मेशन हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 में लिखी है, बेसिक रेडियो वेव थियरी के, ऑक्सफोर्ड बुक्स में भी, सिलेबस में भी। और हमें लगता है ये सब ATPL लेवल का है, इंडस्ट्री लेवल का है, नहीं नहीं नहीं, ये बेसिक है सब। सो डबल साइड बैंड VHF ये भी पूछ सकते हैं आपको। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रोबेबली कोई फिल इन द ब्लैंक ऐसा आ सकता है।
उसका मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हुए विद स्पीच। एक सेंटेंस में पूरा 3 कोड डिकोड कर दिया उन्होंने। HF का भी दिया है, तो कॉम सिस्टम में तो आएगा J3E, उसका मीनिंग भी दिया है। और क्या दिया इंस्ट्रक्शन हमें? इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द डिटेल्स ऑफ द टेबल, बट आपको कुछ ना भी सिस्टम पूछ लेंगे, तो जो जो टॉपिक्स हमने कवर किया उनके एमिशन कोड्स तो हमें करना। Other designators relevant to equipments discussed in phase 2. Phase 2 is nothing but systems with respect to the textbook. ADF में आ रहा है, देखो NO1 A1A और NO1 A2A, बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन, तो आरटी में तो आएगा ही डेफिनेटली। VHF रेडियो टेलीफोनी, RTF, HF, VOR देखो A9 W मैंने ऑप्शन लिया था, मैं बोला वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है। ILS A8W स्लाइटली लेस कॉम्प्लेक्स देन VOR, बहुत सिमिलैरिटीज है VOR ILS में। Marker beacons A2A with NDB, NDB एंड मार्कर बीकन सिमिलरली द सेम होते हैं थोड़े, बट पर्पस अलग है, सब अलग है, ठीक है। मार्कर बीकन मतलब ILS वाले मार्कर बीकन हो गए, NDB मतलब नॉन डायरेक्शनल बीकन्स हो गए। DME का देखो PON P0N, माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम का देखो XG1D, एकदम हाईटेक कोड लग रहा है ना एकदम, लाइक मुझे लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेशन कोड लग रहा है मेरे को विंडोज का। With the exception of ADF, it is unlikely that knowledge of these designers will be examined. This is for यूरोपियन UK, हमारे लिए नहीं है, पूरा इतना तो पेज में इतना तो पढ़ ही लेंगे हम कम से कम। वाई जस्ट ADF, सब पूछेंगे हमको, तो DGC will ask you anything. DGC का अच्छा चीज ये है कि थ्योरी दे विल टेक यू एंड टेस्ट यू एट द कोर, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू एंड योर डेवलपमेंट एज एन एविएटर और एज अ पायलट। So don't hate DGC and the complexity of the exams. ठीक है, चलो। If you have any more questions, drop me a message. Use your time well. Be thoroughly prepared ASAP that you can for your RT. If you have other subjects to do also, so that RT confirm हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से हमें बस पॉलिश करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, फटाफट आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। All right, class. That's it. I hope your dreams are fulfilled. And wherever you think I can help you in doing that, just let me know. Take care everyone. Signing off. मैं पहले जा रहा हूँ क्लास से, ठीक है।